Ji, Assalamu alaikum. Can you hear me, please? Do you have any question from the previous class? Any question? No? Okay, that's great. So, mm, have you gone through with this slide? The Plato, I think yes. Olam the Gooch, I think I covered as well. This. Yes, from here we need to take a start. So, even before the start of the feminism, so this concept was going to get promoted in various meanings. Especially even in the United States, a certain movement got started that women they need to be given rights. They need to be given rights, especially the voting rights. They would be extended to women. And in the Europe and even in the United Kingdom, there is a campaign that women they need to be given more encouragement in economic roles as well. So although the feminism as such, that was the concept of feminism was not existing, but before the emergence of the wave of feminism, still the overall concept was going to have some sort of a more space in different contexts as well. And then the first International Women Conference was held in Paris. That was in 1892. And when the first time International Women Conference was held, at that time, after organizing this conference, the term feminism got appeared in English language. And what do you mean by feminism? So that concept basically that was reflected extensively in English language. So before 1892, there was no concept of feminism in English literature. Although the campaign and the overall objective, they were going to be existing in society in different affairs. But overall, it lacks clarity. What is a feminism? Because the word was not existing in English language. And after 1892, the word got appeared in English language, and then feminism relates with the subordination, it relates with the elimination of discrimination, and it talks of eradication of oppression. So these three things that they are going to get highlighted under feminism, that women they don't need to be considered as a subordinate, and all the attitude and the policies which are discriminatory against women, they need to be criticized, they need to be eliminated, and at the same time, you need to go for certain policy reforms in order to take women out of oppression. Okay. Okay, so what do you mean by feminism? That a feminism is a belief, that is an ideology that men and women they should have equal rights and opportunities. No more patriarchy. No more this concept needs to be supported that men they need to be considered as a master of their women. So men and women they need to be treated on level playing opportunities. So no one is a superior, no one is inferior, no one should be considered as a master, no one should be considered as a servant. And then you could talk of feminism means an organized activity in the support of women's rights and interests. So although there was a certain movement, for example, even I was going to tell you of the United States, that in United States, certain movement, a certain campaign, there was going to get initiated that the women they need to be given political rights, but that was not organized, that was not more collective, that was no more you could say that was going to be pursued in a more formal way. At the same time, you could say that in other European countries, there was a movement for the economic rights. But again, that was not organized, that was not collective. When you're talking of a feminism, so we are going to talk of the more collective approach. We are going to talk of the more organized approach. We are going to support certain formal approach that these are our rights, these are the demands for women. Okay. So you can say feminism is an organized activity in the support of women's rights and interests. Okay.
And the third interpretation of feminism is the advocacy of women's rights on the ground of equality of the sexes. That it doesn't mean that you are going to discriminate individual. That since you are female, so that's why you cannot be given political role. Since you are female, so that's why you cannot take administrative role. Since you are female, so that's why you cannot be recruited as a commission officer. Since you are female, so that's why you need to be get encouraged in just a marketing role. Since you are female, so that's why only that's work oriented that can be offered to you. Okay, so that's all about the feminism. Clear? Okay. If I'm going to share this slide with you, is this feminism or not? What would be your answer? So you mean to say this is not a feminism? Why this is not a feminism? Or you're going to support your answer that it doesn't fall under the domain and under the scope of the feminism? So what is feminism? Support to the equal rights. Okay. At the same time, are you going to have impression that there's a violence in this person? I think he feels more comfortable with this role. So apparently, this is not a feminism. But if there's a no feminism and voluntarily, if you're going to surrender yourself for certain role, so then feminism means that there should be no violence. Okay. So if a person doesn't feel disgruntled and he's not going to give this impression that he's going to become a victim of a violence, so definitely it would be excluded as well. But apparently, you can say this is not a feminism because feminism talks of equality. Feminism is not hating men. Okay, cannot. Okay, that's true. Okay, so the term you're going to use that you should not hate against men, this term is known as a misandry. Okay, so misandry mean when you believe when you believe that you should not hate men and you should not discriminate on the basis of sex. Okay, so you should not show unbiased policies towards the women. For example, if Kainat is going to organize a movement and a certain male members they're interested to be part of it, but Kainat is going to refuse that since you are a man, so that's why I'm going to restrict your movement. I'm sorry, I'm not going to more welcome you. So that will be misandry that you are going to restrict them because of their identity as a male. Got it? Okay, and misogynist means, for example, misogynist means if a Kanat is organizing a certain movement and certain women they are interested to become part of it, and Kanat says, "So I'm sorry, since you are women, so I cannot offer you this role." So this is a misogyny that you hate against women. You're going to discriminate on the basis of individual as a woman. Got it? So please be clear about the misogynist and misandry. Is it clear to everyone? Thank you very much, Alishba. Okay, if I say feminists are angry women, it is true or false? Feminists are angry women. Is it true or false? So yes, Yusra, thank you very much. So when you say feminists are angry women, so that is false statement that could not be stated as a true. When you say men can't be feminist, is it true or false? Men can't be feminists, so men can't be feminist. So again, yes, you can say it is a false statement. And if you say feminists only support women, is it true or false? Feminists only support women. I'm proud of you. Thank you very much. Because these are the certain myths about feminism. Okay. So, myth means something that is going to be stated in a negative way, but it doesn't have any clear connection with the reality. So, all of these myths. If you say that feminism means to promote hate against men, it would be wrong. If you say feminists, they just want to empower women, that would be wrong. If you say feminists are the angry women, again, that would be a wrong statement. And feminists just want to argue. Again, that will be a wrong statement. So feminism is going to talk of the equality and how the equality could be achieved. There are two approaches, descriptive approach and normative approach. Descriptive approach means the current position, how women or how particular member of sex they're going to be dealt in society. That is a descriptive approach. And what the ideal approach, the particular member of sex they need to be dealt in society, that would be a normative approach. Okay.
For example, in Pakistani society, you say that a women's role is limited to home. This is a descriptive approach. If you believe women they need to be given encouragement in the outdoor activities, so that would be a normative approach. Got it? Kanat Kundi, I'm sorry. Kanat, is it clear so far? If you need to say, I have to repeat something. Oh, clear. Thank you very much, Kanat Kundi. Okay. चलिए आपकी तो कास्ट है ना ये कुंडी वरना पंजाबी में कुंडी किसी और चीज को कहते हैं दैट वाज जस्ट एन लेटर नोट जी मैं रिपीट कर देता हूँ हीरा जब आप कहते हैं ना नॉर्मेटिव अप्रोच नॉर्मेटिव का ये मतलब होता है कि नो कोई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर कि आप चाहते क्या हैं व्हाट ऑट एंड व्हाट ऑट नॉट टू बी व्यू हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल देखिए ना कि आप कहते हैं कि फीमेल रात को निकलेंगी तो उनको हरेसमेंट उनकी हो सकती है ये डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है कि आप कहते हैं कि फीमेल रात को अकेले ना ट्रैवल करें नॉर्मेटिव अप्रोच ये होगी कि अगर रात को निकलें तो वो सेफ फील करें कि यार उनके अगेंस्ट हरेसमेंट नहीं होनी चाहिए उनकी करेक्टर असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए उनके अगेंस्ट ईव टीजिंग नहीं होनी चाहिए फीमेल्स की जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर होनी चाहिए तो ये एक आइडियल अप्रोच है कि आइडियली क्या होना चाहिए जो आइडियली सिचुएशन आप इमेजिन कर रहे हैं या फ्यूचर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नॉर्मेटिव में आता है और जो करंट कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिस्क्रिप्टिव में आता है गॉट इट तो डिस्क्रिप्टिव को डिस्कस किए बगैर आप आइडियल आप फ्यूचर रोल की बात नहीं कर सकते कि आप कहते हैं कि करंटली फीमेल को इस तरह डील किया जाता है होना क्या चाहिए दैट वुड बी नॉर्मेटिव अप्रोच गॉट इट नो 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 नॉट एट ऑल युसरा युसरा यहाँ पे यूटोपियन की बात नहीं हो रही आप कहते हैं कि अब देखो ना जिस तरह हमारी सोसाइटी में आप कहते हैं कि फीमेल की जो उनकी जो मेटर्निटी लीव है आप कहते हैं कि फीमेल दे आर एंटाइटल्ड टू अवेल मैटरनिटी लीव फॉर 12 वीक्स and if you support women maternity leave it should be extended to 14 weeks that is a normative approach if you're talking mera jism meri marzi that is a normative approach कि females they should be given more freedom they should be given more power they should be given more support in terms of exercising their right to marriage decision and currently females they're going to be killed in the name of honor so that is a descriptive approach Yusra is it clear yes thank you very much okay, so there are the various theories of feminism. So these theories they could be classified on the basis of the goal, and on the basis of the nature, and on the basis of the strategies to which the goal that is going to be achieved. So we are going to take start from liberal feminism. Okay, so these are the six theories: liberal, radical, Marxist, psychoanalytical, man feminism, and the postmodern feminism. But the first that is a liberal feminism. Liberal feminism is in the favor of providing equality in the political domain, civil, social, and economics affairs as well. So this is a liberal feminism. Okay, and there's a difference between liberal and radical. So ये बताएं अगर ओवरऑल जब हम वर्ड यूज करते हैं कि यार ये बड़ा लिबरल सोच है ये बड़ी रेडिकल सोच है तो इन दोनों में क्या फर्क है वैसे बाय द वे जब हम लिबरल अभी अब छोड़ दें फेमिनिज्म को जब हम वर्ड लिबरल यूज करते हैं या रेडिकल यूज करते हैं तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा दोनों वर्ड्स का लिबरल मींस ब्रॉड माइंडेड अलिशबा थैंक यू वेरी मच इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी आप या हीरा यूनस और हीरा व्हाट डू यू मीन बाय नैरो माइंडेडनेस can do you have any specific examples Aksa, I think you can give a very clear cut example ओ भाई आजाद ख्याल की भी तो कोई एग्जांपल होगी ना मारिया आप बताएं ना जिंदगी में कभी आजाद ख्याली आपने शो की हो examples of education for women no okay anyhow thank you very much pushing for policies that promote paid maternity leave and affordable childcare to support women's career advancement yes that could be a good example
कि आप ये कहते हैं कि फीमेल की एम्पावरमेंट हो, तो आप कहते हैं कि फीमेल का जो रोल है, रिप्रोडक्टिव रोल, उसको वो कंटिन्यू रखें, लेकिन फीमेल को रिप्रोडक्टिव रोल के लिए छुट्टी मिलनी चाहिए, उनको पे मिलनी चाहिए, उनकी जॉब प्रोटेक्ट होनी चाहिए। तो अगर आप रिफॉर्म्स लें विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो दैट वुड बी लिबरल। अगर आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, इसको रिप्लेस करें किसी और सिस्टम के साथ, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम फीमेल को एम्पावर कर ही नहीं सकता, उसमें रिफॉर्म्स लेना बिल्कुल फजूल है, so that you are going to support the radical approach. Okay, so liberal, they want to bring reform within the existing system. Radical, they want to replace the existing system with the new one. Okay. Okay, when you're talking of the reforms, so reforms, they could be done in the form of laws, by introducing various legislation, and by making certain reforms in their domestic affairs as well. So that is the liberal feminism. If we're talking of the proponents of liberal, what do you mean by proponents of liberal feminism? Proponents means what? What do you mean by proponents? So yes, ठीक है. Advocates. Thank you very much. The supporters. Well done. Okay, so if you're talking of the liberal feminists, so Mary Wollstonecraft was a liberal feminist. Mary Wollstonecraft wrote a book of vindication of the rights of women. Okay, then you could talk of the other liberal feminists like John Stuart Mill, Harriet Taylor. So again, they were also liberal feminists as well. Okay, and if you're going to talk of uh, if you're going to talk with the Mary Wollstonecraft wrote the book A Vindication of the Rights of Women. So she was in the favor of equal access to education. Okay, so basically she was of the view that women, they can get empowered when they're going to have their when they're going to have improvement in their literacy rate, and education could be considered as a tool in terms of their empowerment. When you're going to talk of the Taylor and Mill, so they were going to emphasize on the reforms in the political process and in the economic sphere. That women, they need to be given engagement in the political roles as well, and they need to be given more opportunities in economic sphere as well. So that could be considered as a tool for women empowerment. Then you could talk of Elizabeth Cady Stanton. So basically, Cady Stanton was playing more role for the political role as well as certain other roles as well. And the book that was written by John Stuart Mill, the name of the book was The Subjugation of Women, The Subjection of Women. Okay, The Subjection of Women. So these were the certain proponents of the liberal feminism. If you're going to talk of the tenets of liberal feminism, what do you mean by tenets? Tenets means what? And proponents means the supporters, not the components. Okay. So when you're talking the tenets means yes, you can say the principles. Okay. So what were the pillars? That's the more appropriate, the principles. Yes. So the first principle of the liberal feminism is uh, that this inequality, there's a no inequality between male and female. Okay. So they were on to view that individuals, they cannot be discriminated on the basis of sex. Yes, you can say there are certain biological differences. For example, if you say a female can give a birth to a child, while a male cannot give a birth to a child, so you can say yes, there are certain biological differences. If you're talking of physique, so you can say yes, there are certain biological differences. But when you're talking of their social recognition, so liberal feminists were of the view that the social differentiation cannot be that cannot be supported on the basis of their biological differences. So they both male and female, both they're going to have equal status in society. So you can't discriminate them just on the basis of biology. Okay. Okay, so it means that if you cannot discriminate on the basis of biology, it means females, they need to be given more freedom in the family sphere as well, in the working opportunity, educational opportunities, and female, she needs to be given more freedom in terms of exercising her reproductive rights as well. Okay, cannot. अच्छा, वैसे मैं समझ रहा था कि मेरे वैसे स्लो ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप कहते हैं तो मैं मान जाता हूँ. ठीक है.
तो उनका ये था कि ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है और ओवरऑल इन चीजों में फीमेल को फ्रीडम मिलनी चाहिए, और आप ये नहीं कह सकते कि लड़की घर के सारे काम करे क्योंकि वो बायोलॉजिकली डिफरेंट है, ठीक है, या वो नहीं पढ़ेगी क्योंकि वो बायोलॉजिकली डिफरेंट है, या फीमेल के पास ये कितने बच्चे पैदा करने हैं उसका ये इख्तियार नहीं है, ये मेल का इख्तियार है क्योंकि वो बायोलॉजिकली डिफरेंट है। तो उन्होंने ये कहा था कि ये उसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी कि आप उनको बायोलॉजिकल डोमेन की बेस पे जो डिफरेंट सफेयर्स हैं उसमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब समझ आ गई? अब स्पीड ज्यादा तो नहीं है? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते तो उन्होंने ये कहा कि फिर मेल रियलाइज करे ना कि शी इज इक्वल टू मी, ठीक है, और फीमेल भी रियलाइज करे आई एम इक्वल टू हिम। अब फॉर एग्जाम्पल युसरा की बात करें तो युसरा भी समझती होगी कि भाई जो मेरा मेरा भाई काम कर सकता है वो मैं नहीं कर सकती। If I'm not wrong, I think there was a female who is inspector and she's from your batch. Last time she was going to tell of certain examples that I am in ASF. At that time, I got realized that the role that is going to be performed by men, it can't be done by me because they can run for a longer period of time in a certain period of times, and physically they are more strong. They feel more comfortable by performing their duties at the airports. And being a female, I cannot stand for a longer period of time, and physically I'm no more active as compared to my colleagues. I think that example from your side, right? एनीयो, थैंक यू वेरी मच। तो आप ये कहते हैं कि ये फीमेल को भी रियलाइज करवाएं कि भाई वो भी उतनी कॉम्पिटेंट है। आप देखो ना कि अगर यूसरा ये मेंटली तौर पे अगर ये एग्जास्ट कर जाएगी और यूसरा मेंटली तौर पे ये समझती है कि भाई मैं तो लड़कों की तरह नहीं कर सकती, मैं तो इतनी एक्टिव नहीं हूं, तो जब आप साइकोलॉजिकली मान चुके हैं कि आप एक्टिव नहीं हो तो बात खत्म हो गई। इसी तरह क्या सारे मेल जो हैं वो रात की ड्यूटी खड़े होके वो कर लेते हैं? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो भाई बात ये है कि आप रियलाइज तो करें ना कि आप इक्वल हैं या आप वो काम करना चाहते हैं। तो उनका ये था कि ये मेंटेलिटी को चेंज करें और इंडिविजुअल्स अपने गोल्स को बायोलॉजिकल आइडेंटिटी की बेस पे कंफ्यूज मत करें। गॉट इट? इज फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू यू? ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। ओके, तो जब आप ये मानेंगे कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ये वैसे फर्स्ट पॉइंट की ही डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आ रही है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि जब आप बायोलॉजिकल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना करें तो इट मीन्स कि ये जो आइडेंटिटी है आप इंडिविजुअल्स को उनका रियल आइडेंटिटी दें। आप उनकी फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन बंद कर दें कि फीमेल को कूगर कहना, विक्सन के नाम का देना, उसको किटन का नाम देना, कि इट डजंट मीन कि फीमेल कुड बी कंसीडर्ड एज अ सेक्सुअल कमोडिटी। So then you have to stop judging female as a sexual commodity. You have to consider women as a human being. And human beings, they have the same potentials. So they are not just for your own sexual desires. Uh, औरत को भी सोसाइटी में इक्वल परसेंटेज मिलनी चाहिए हर काम में, तो क्या फीमेल्स कर लेंगी क्या? अच्छा, ये मोहम्मद नबील, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ नबील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम नबील। सर मेरा ये कहना था कि मेरी माइंड में एक डाउट है, क्या ये जो फीमेल के स्पेसिफिक रोल है और एक मेल के स्पेसिफिक रोल है, क्या इन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में मिले तो क्या जो मेल काम करते हैं वो फीमेल कर लेंगे अगर 50-50 रोल मिले, और जो फीमेल करती है सोसाइटी में क्या वो मेल कर लेंगे अगर इन दोनों को मसलन 50-50% हर काम में मिले? सर कोई मजदूरी मजदूरी से लेके मिनिस्ट्री तक और इन दौरान जितने भी काम आते हैं वो सब। मजदूरी में क्या आता है? सब डिफरेंट तरह की मजदूरी है ना, जो फैक्ट्री वगैरह में और उसके अलावा दूसरे वर्कर वगैरह वो भी। अच्छा, ये बताएं कि आपको फैक्ट्री में हम मजदूर लगवा दें तो वो काम आप कर लेंगे? सही सी बताएं। अ, सर वो देख, मैं अपनी बताऊँ तो अगर तो मेरे उसमें इंटरेस्ट हुआ तो फिर मैं करूँगा।
नहीं नहीं तो अभी छोड़ देना इंटरेस्ट की, जो जितनी, देखिए आपने एक जनरल स्टेटमेंट की है ना, तो मैं भी जनरल स्टेटमेंट ये कह रहा हूँ कि हम आपको फैक्ट्री में काम दें तो आप कर लेंगे। हम सारा दिन कहें कि ये चीजें उठा के इधर से उधर रखनी है आपने, आप कर लोगे? यस सर। तो फीमेल भी कर लेंगी। तो देखें सबसे ज्यादा जो, लेट मी कंप्लीट, आपकी सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। जी। आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट प्रोवाइड 37% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स। आपका जो सबसे ज्यादा लेस मैकेनाइज सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है। और ओवरऑल अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल की जो एंगेजमेंट है वो एग्रीकल्चर में है। और एग्रीकल्चर क्योंकि लेस मैकेनाइज सेक्टर है, वहां पे इतना वो मैकेनिकल वर्क नहीं है, सारा हाथ से काम होता है। आई डोंट नो के फ्रॉम विच एरिया यू आर बिलोंगिंग, आई नो आई एम फ्रॉम पंजाब। और पंजाब में तो ये जो कल्टीवेशन होती है वो तो सारी फीमेल्स करती हैं। अगर आप इसकी कॉटन की भी बात करते हैं तो उसमें भी तो फीमेल इन्वॉल्व है सारी। वो तो मेल आपको फिजिकली नजर ही नहीं आते। तो ये तो आपने मिथ बनाई हुई है कि भी फीमेल काम नहीं करती, फीमेल्स तो सारे काम करती हैं। और ओके सर। रही बात जो आपने कहा कि वेस्टर्न सोसाइटी की बात कर ले, वेस्टर्न सोसाइटी सारी मैकेनिकल हो गई है, हर काम मशीनरी से होता है। अगर ले जो मेल है अगर वो इतना ही उसको फिजिकल वर्क का शौक था तो भाई पूरा वेस्ट मैकेनिकल इंडस्ट्री पे क्यों चला गया है? हर काम के लिए कोई भी काम करना है आपको वो मशीनरी की जरूरत होती है। तो अगर मेल भी हर काम के लिए वो ईजमेंट चाहता है या वो कर सकता है तो फीमेल भी अगर कर लेगी तो कोई क़यामत नहीं आएगी। हम हमेशा उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि वो नहीं कर सकती। अच्छा, जब मैंने आपसे पहले कहा कि आप काम कर लोगे, आपने कहा कि अगर मेरा शौक हुआ, तो ये अगर मगर पे बात होगी तो फीमेल का अगर शौक हुआ तो वो भी कर लेगी। अगर हर मेल जो है, चले आपने तो फौरी कह दिया ना मैं कर लूंगा, मे बी कि हमारी क्लास में कोई और लड़का हो जो कहे जी कि मेरे से फिजिकल वर्क नहीं होता, देयर आर वेरियस रीजंस। अब शबाज शरीफ को कहो जी कि आप कुछ काम करो फिजिकल, तो उसका फॉर एग्जाम्पल कमर का इशू है, वो तो सही बैठ भी नहीं सकता। मैं आपको वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो भी काम तो नहीं कर सकता। तो इसी तरह कुछ फीमेल्स के भी इश्यूज हो सकते हैं कि समटाइम वो नहीं कर सकती। लेकिन ऑन द अदर हैंड यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट कि जो सारी फीमेल है वो काम नहीं कर सकती। हमारी जो सबसे ज्यादा फीमेल्स का एंगेजमेंट है वो बॉन्डेड लेबर में है। बॉन्डेड लेबर से क्या मुराद है कि ये जो आपके जो ब्रिक फैक्ट्रीज हैं और आपका जो एग्रीकल्चर है, और इवन सिंध में, थैंक यू वेरी मच आसिफ, ठीक है, तो उसमें ज्यादा फीमेल ज्यादा इंगॉल्व। और आपका जितनी भी बॉन्डेड लेबर है वो सारी तो फिजिकल वर्क होती है, और फिजिकल वर्क में उनके वो बच्चे करते हैं और वो फीमेल्स खुद करती हैं। देखिए बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लड़की है, अब फीमेल की लड़की में उसकी जो बॉडी है उसमें डेलिकेसी है, वो मेल में उस तरह से डेलिकेसी नहीं है। आप ये कहेंगे कि उसकी बॉडी इस तरह से है, उसकी बॉडी इस तरह से है, तो देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन ये कहना कि उसकी बेसिस पे अगर सारे मेल नहीं कर सकते तो सारी फीमेल्स भी नहीं कर सकती। गॉट इट ओके। नबील? अब आप कंटिन्यू करें। जी सर, मैंने कुछ एक्चुअली डिस्कशन इसलिए करना चाहिए थी क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन होता है, हम बुक्स पढ़ते हैं, डिफरेंट ऑथर की व्यूज पढ़ते हैं। तो इससे ये है कि डिस्कशन से हमें क्लैरिटी हो जाती है, और जो अपना पॉइंट होता है, अपनी ओपिनियन जो बिल्ड हम करते हैं, उसमें हम कोई क्लियर ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लेने में मेरी में हेल्प की इस नहीं नहीं, डिस्कशन। कोई ऐसी बात नहीं है भाई, और वो मेरा तो काम है ही। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपके क्वेश्चंस को क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने आपको फर्दर ये नो कहा सर। है कि आप उसको काउंटर कर लें। जी सर। देखिए इसमें ये नहीं होता कि अगर मैं जेंडर स्टडी पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोई हरफे आखर हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। ठीक है, सर इसका एक्चुअली, मतलब ये नहीं, नहीं मेरी बात सुने ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं तो आपका नॉलेज कम है। हमेशा टीचर्स अपने स्टूडेंट से ही सीखते हैं, और वी आर ऑलवेज इन अ लर्निंग प्रोसेस। तो मैं ये सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई आर्गूमेंट है तो आप वो दें। ओके सर, इधर सियालकोट फैक्ट्रीज है ना, तो उधर भी मैंने देखा है कि मेल और फीमेल की अलग अलग बसेज हैं, और इधर डेली फीमेल की बहुत जो बड़ी फैक्ट्रीज है ना, उनमें फीमेल का कोटा एक अलग है, जबकि कुछ फैक्ट्री में मेल ज्यादा, कुछ में फीमेल भी ज्यादा वो वर्किंग करते हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर आपने जो सियालकोट की बात की कि लड़कियों की बस अलग है लड़कियों की अलग है, तो बस को आपको क्या इश्यू है? आपने उनकी बस में जाना है? नो नो सर, मैंने बस की इशू की बात नहीं की, मैंने ये बोला है कि उधर भी फीमेल इन्वॉल्व है वर्किंग में। मैंने तो ये पॉइंट उठाया नहीं, मैंने कोई और चीज बात की थी।
हाँ नहीं देखिए, वो जो चीज आप बात कर रहे हैं ना नबील, रीजन क्या है कि हमारी सोसाइटी में हमने एक फीमेल को शुरू से सिखाते हैं। देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नबील आपसे बात करूं कि आपकी जो आपकी बहनें हैं, जी। जी, माशाल्लाह, वो क्या करती हैं? सर दो मैरिड है और एक स्टडी कर रही है। एक स्टडी कर रही है, ठीक है। अब देखो ना कि फॉर एग्जाम्पल जो आपकी बहन स्टडी कर रही है, आप उसको तो चाहते हो कि वो ब्यूरोक्रेट बने, आप उसको तो चाहते हो कि वो अच्छी पोजीशन ले, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ले। लेकिन जब कोई और लड़की उस रोल पे आती है तो आप उसको चैलेंज करते हो कि ये लड़की हो के ये रोल सही परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हमारा मसला ये है कि हम अब खुद जो है ना वो कंफ्यूज है। हम अपने लिए, यानी कि मैं ये तो चाहूंगा कि ये स्टैंडर्ड मेरे लिए ये होने चाहिए। जब मैं नबील की बात करूंगा ना, तो मैं वो नहीं चाहूंगा कि नबील भी वो उन स्टैंडर्ड्स को एंजॉय करे। तो द प्रॉब्लम विद अस कि हम ओवरऑल जो है अपनी फैमिली की हद तक तो हम इंडिपेंडेंस की बात चलो कर लेते हैं, जब सोसाइटी की बात आती है तो फिर हम कहते हैं कि लड़कियां कर ही नहीं सकती। अगेन आई ओके। एम नॉट गोइंग टू से कि मेल और फीमेल दोनों सेम हैं, मेल और फीमेल बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं। लेकिन बायोलॉजिकल डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों की जो सोच है उसमें फर्क है, दोनों की जो कैलिबर है उसमें फर्क है, या दोनों की जो ग्रोथ के पोटेंशियल्स हैं वो किसी तरह से भी कंप्रोमाइज होंगे। तो मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ। सर मेरा एक सवाल है, ये यूरोप और यूएस में फीमेल को इस एरिया की नस्बत, एशिया की नस्बत बहुत ज्यादा आज़ादी है, तो क्या उधर वो कितने परसेंट रोल है, 50-50 उनको क्या आज़ादी है, जितनी मेल को आज़ादी है उतनी फीमेल को है? व्हाट डू यू मीन बाय आजादी? सर मेन के मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह वो एक मेल को एक सोसाइटी के अंदर किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती, वो कोई भी काम में इन्वॉल्व हो सकता है, वो कुछ रोल है उसे उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, तो क्या फीमेल भी उधर इस तरह की है? हम मैं वैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिला है, इसलिए मैं आपसे भी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं, वहां पे तो लड़कियों को ज्यादा आजादी है। ओके, थैंक यू सर। जोन के जो जोन के जो लॉज वगैरह हैं, ये ओवरऑल जो स्पोर्ट की बात करते हैं तो वो फीमेल्स को देखें। एक चीज और है, जी। जो कुछ एक है बेसिक चीज, वो ये है कि जब आप नेचुरल इंस्टिंक्ट की बात करते हैं तो अगेन आप ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है फीमेल की ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है। वो यूरोपियन सोसाइटीज हो, वो पाकिस्तानी सोसाइटी हो, या वो अफगानिस्तान हो, वो कोई भी हो, ठीक है। अब ओके सर। आजादी होना और ऑब्जेक्टिफिकेशन होना बोथ आर डिफरेंट। आप जितनी मर्जी आजादी दे दें, जितनी मर्जी इक्वालिटी दे दें, तो अगेन आप ये कहते हैं कि सम टाइम जो फीमेल है उसकी विक्टिमाइजेशन हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन, ठीक है। और उसमें जो एक रीजन है वो ये है कि जो फीमेल है वो इन टर्म ऑफ, जब उस, खैर ये मेरा ख्याल है अभी इस डिस्कशन को छोड़ दें, ये अभी हम बताएं, मैं आपको ना जब ये वेव करवाऊंगा ना आपको चैप्टर फोर्थ में जब हम चीज करेंगे थर्ड वेव फेमिनिज्म, तो वो ज्यादा रिलेटेड है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक तरह तो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में फिर फीमेल विक्टिमाइज हो जाती है, उसको विक्टिम बनाया जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। तो वो मेरा ख्याल है कि अभी उस डिस्कशन को फर्दर टाइमिंग वी कैन लीव। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी रिक्वायरमेंट है कि जी फिजिकल लेबर आपको इतनी चाहिए, यानी कि आपका जो फिजिकल वर्क, आपका जो आपकी लेबर है वो इतना फिजिकल वर्क करे। अगर एक फीमेल कर सकती है तो ठीक है, नहीं कर सकती तो ना करे। लेकिन यू कैन नॉट मेक योर ओपिनियन इन द बिगिनिंग सिंस शी इज अ फीमेल सो शी कैन नॉट डू इट। तो भाई हर मेल भी तो नहीं कर सकता ना उस तरह से। अब आर्मी की बात कर लो, आप कहते हो कि शुरू में क्या होता था कि बॉयज जो थे वो आर्मी का पार्ट बनते थे, तो क्या सारे लड़के आर्मी में भर्ती हो जाते थे? आपने नहीं। क्राइटेरिया बनाया हुआ है ना आईएसएसबी का, कि भाई ये क्राइटेरिया होगा, उसमें जो क्वालिफाई करेगा वो उसका पार्ट बनेगा। हर मेल तो फिर भी आर्मी में नहीं जाता था। तो सेम इज द केस, ये क्या फीमेल को भी अपॉर्चुनिटी दे दो, अगर वो समझती है कि वो कर सकती है तो इट्स ओके, अगर वो नहीं कर सकती तो आप उसको रिजेक्ट कर दें। लेकिन इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटी तो देना, आप उसको सेक्स बेस्ड डिफरेंसेस की बेस पे डिस्क्रिमिनेट ना करें। नबील, इज इट क्लियर? यस सर, इट्स क्लियर। थैंक यू सर। चलिए, यू वेलकम। रजिया, मेरा नंबर मैसेज किया आपने, क्या लिखा है आपने?
Since birth is inculcated in the mind, she's a weak physically, emotionally. Certain roles are assigned to her, and she's a woman. She's to serve father, brother. हाँ ठीक है. Sir, I won't grant this argument kindly. अच्छा चलें जी, ये आयशा लाल. अच्छा आयशा लाल का मैं नाम पढ़ता हूँ ना तो मुझे वो जना हाउस वाली वीडियो याद आ जाती है, वो जो बंदा उसमें नारे लगा रहा होता है, लाल है लाल है. हैं? चलिए. जी आयशा. अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम. अस्सलाम मेरी आवाज़ आ रही? जी जी, आपकी आवाज बड़ी जबरदस्त आ रही है. सर मैं जस्ट ये ऐड करना चाह रही थी कि बायोलॉजी में भी हमने पढ़ा था कि जब हम अपने मसल्स वगैरह को यूज़ नहीं करते काफ़ी अर्सा, तो वो मसल्स हाइपरट्रॉफी इस तरह का वो सीन था। और सेकेंडली ये कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जब वो ज़्यादा मस्कुलर वर्क करते हैं तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ज़्यादा बन जाते हैं। तो बचपन से ही मेल को तैयार किया जा रहा है कि उसकी बॉडी फिर वो टफ काम करने के लिए वैसे हो जाती है, और फीमेल को इतना वीक बनाया जाता है खुद। और सर इसकी एग्जांपल ये है कि कुछ पिछले कुछ दिन पहले कुछ दिनों की बात है कि हम कश्ती पे सवार होना था, तो मेरे भाई थे मेरे साथ। तो वहां पे एक बोर्ड सा था लकड़ी का, तो वो खुद तो उतर के मुझे उन्होंने हाथ दिया कि मैं इजिली, वही डेलिकेसी वाली बात आ गई ना। लेकिन मैंने कोशिश की, मैं खुद कर गई वो काम। दूसरे नंबर पे सर ये बाइक पे जो दो तरफ टांगे करके बॉयज बैठते हैं, जो एक चला रहा है बाइक उसके पीछे जो बैठते हैं, गर्ल्स एक तरफ टांगे करके बैठती हैं। तो सर वो भी आ जाता है कि ये गर्ल्स वाला स्टाइल नहीं है। तो इस तरह करके सर नहीं हमारी तो दोनों को, नहीं तो कैसे बैठना चाहिए आप बताएं. सर गर्ल्स गर्ल्स भी बॉयज की तरह राइड कर सकती है ना बाइक। बिल्कुल कर सकते हैं. तो सर मैं उस स्टाइल में बैठती हूँ, तो मुझे सोसाइटी में ये कमेंट्स मिलते हैं कि आप लड़कियों की तरह बैठा करो एक तरफ दोनों टांगे करके। तो सर हमारी सोसाइटी में हमारी बॉडी को ही वैसा बनाया जा रहा है कि फिर इन द एंड फीमेल्स वही वीक बन जाती हैं और डेलिकेट बन जाती हैं। हाँ चले यानी और ठीक है. आयशा लाल, थैंक यू वेरी मच. अगर हम थैंक इंडिया की बात करें, वो एक और रीजंस हैं, आई डोंट वांट टू डिस्कस देम कि क्यों हमारी सोसाइटी में वो हमेशा हम कहते हैं कि दिस इज फॉर बॉय, दिस इज फॉर गर्ल. यू आर वेरी मैच्योर इनफ, यू शुड फाइंड द आंसर बाय योरसेल्फ एज वेल. लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, किसी हद तक आपकी बात ठीक है कि ये आपकी जो डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज जनरेटेड बाय द सोसाइटी. कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो जो फीमेल्स हैं वो तो मर्दों की तरह ही बैठती हैं. इंडिया में तो अब मूवीज में देख लें कि जो हीरोइन है, अब हीरोइन जब हीरो के पीछे बैठती होती है तो वो एक तरफ तो नहीं बैठती पाकिस्तानी स्टाइल में. वो तो अगर वेस्टर्न सोसाइटी की भी बात कर लें तो वो हीरोइन तो ना भी हीरोइन हो, उसकी जो फॉर एग्जाम्पल वो पार्टनर है उसकी, वो तो उसके ऊपर चढ़ के बैठती है. तो दिस इज एंटायरली डिफरेंट. कि अब ये कहना कि जी कि लड़की उस तरह बैठ नहीं सकती, बैठ तो सकती है. वो एक हमारी कल्चरल रीजंस हैं या कि हमारी सो कॉल्ड एक सोच है कि इससे ये इम्पैक्ट होगा, बला होगा, दैट इज अनदर स्टोरी. तो किसी हद तक जो है इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज इवन, अब वो तो चलो बाइक पे बैठना तो दूर की बात है. नॉर्मली हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि आप फीमेल्स को डिस्कस करते हो टू सिट इन अ पर्टिकुलर वे. ठीक है. वो नहीं है उसमें. तो खैर टू मेक इट शॉर्ट, हम ये कहते हैं कि अगेन ठीक है कि जो मेल है उसमें किसी हद तक स्ट्रेंथ है क्योंकि उसकी मस्कुलर बॉडी है. ठीक है. वो फिजिकल फोर्स ज्यादा अप्लाई कर सकता है. बट इट डजंट मीन कि जो फीमेल है वो फोर्स जो है वो नहीं लगा सकती या वो अपनी जो पोटेंशियल्स हैं उनको डेवलप नहीं कर सकती. तो अगर फीमेल को करेंगे तो फीमेल भी अपने पोटेंशियल्स को यूटिलाइज कर पाएंगी. सर कैन वी कोट, वी कांट. सर वी कैन कोट कि वी कांट. क्या कहा है आपने तायरा, मुझे समझ नहीं आ रही. तायरा आपने क्या कहा है? शी सेड वी कैन नॉट बुक बाइक, आई थिंक. अच्छा चलें, वो आप तायरा खुद ही नहीं बोल रही. एनीहो, क्लियर.
इवन अगर मैं आपको अपनी एक एग्जांपल्स बताऊं तो इनिशियली जो था, अ, खैर ये मेरा ना 2019 का एक्सपीरियंस था। तो 2019 में जो है, नॉर्मली ये होता है कि अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी का वो आइडिया हो, तो मोस्टली आपको घर जो है ना अनफर्निश्ड मिलते हैं। ठीक है। और जब आप लीव करते हैं तो आपको अनफर्निश्ड ही देने होते हैं। ये नहीं होता कि सामान आप छोड़ जाएं, ऐसा नहीं होता। अगर आप सामान छोड़ते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। यू हैव टू पे काउंसिल टैक्स समथिंग लाइक दिस। तो आपको होता है कि यार मैं चीजें ना फिर फ्री में चाहे दे दूं, लेकिन किसी को दे दूं। तो मैंने ना वॉशिंग मशीन थी घर में, तो मैंने वो लगाई कि मैं सेल करना चाहता हूँ। तो एक लड़की आई, तो कहती कैन यू रिमूव दिस। अब क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो जो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपको चीजों का पता हो, कि थोड़ा बहुत आप प्लम्बिंग कर लें, कुछ थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल कर लें, कुछ वुड वर्क में थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो। हमारी सोसाइटी में तो लड़कों को वैसे ही डिस्करेज किया जाता है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं आता करना। तो शी लुक्ड एट मी विद वेरी स्ट्रेंज इम्प्रेशन। और उसने एक मिनट में उसने ये किया, और यानी कि वो सारा जो था उसको उसने वो सेपरेट किया। उसके बाद उसने वो खुद ही उसको मूव करके तो एक मिनट में उसने गाड़ी में रख लिया। तो मैं उसका मुंह देख रहा था कि यार ये मेरे से तो नहीं हो सकता था। तो अब उसकी बेस पे, क्योंकि ये जो अभी बात कर रही थी ना, ये लाल जो है, मैडम लाल, कि हमारी सोसाइटी में हमेशा जो है आप चीजों को एक पर्टिकुलर एंगल से ही करवाते हो। ठीक है। और इसी तरह जो मेल हैं, अब मेल को भी एक, मुझे याद है कि फॉर एग्जांपल जब फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज लिविंग पाकिस्तान, तो मैंने ना अपनी अम्मा को कहा, मैंने कहा ये ना मुझे बताएं खाना कैसे बनता है। तो मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा ये तू बाहर जाके, यानी कि उनके एग्जैक्ट वर्ड्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर आपने बाहर जाके खाने ही बनाने हैं तो फिर पाकिस्तान में ही रहो, इधर तो इज्जत है आपकी। तो अब देखो ना कि आप मर्दों को, यानी कि एक बेसिक स्किल है ना एक, तो आप कभी भी मर्द को एनकरेज नहीं करते कि आप जो है वो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको आनी चाहिए, यानी कि वो परेशानी में रह ले वो ठीक है, लेकिन आप उसको उसकी सर्वाइवल को ईज करने के लिए कभी भी सपोर्ट नहीं करते। ये तो अब ट्रेंड चेंज हुआ है ना कि अब आप थोड़ा सा स्किल आ गई है, फैमिली भी एक्सेप्ट करती है। तो पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि आप, वो अलग बात है कि वो आज तक फिर मुझे नहीं आया, क्योंकि वो मेरे माइंड में बैठ गया कि यार मैंने नहीं करना। ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी कि आप फिर वो हमेशा डिस्करेज ही करते हैं। अगर कोई करना भी चाहता है तो आप उसे कहते हैं कि यार ये तो लड़कियों वाले काम है। तो बंदा भी फिर सोचता है कि हाँ यार ठीक है। तो वो नहीं करता, आप तंग होते हैं। उसका मैं तंग हुआ भी कि ऑब्वियसली मुझे जब खाना नहीं आता था बाहर, मुझे हलाल फूड का इशू बनता था। तो फिर यही चॉकलेट्स और ये सारी चीजें ही होती थी और सारा कुछ। तो लेकिन बट स्टिल इट इज ओके कि आप फिर वो, क्योंकि आप उनको वो ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं कि आपने ये काम करना है, बीइंग अ बॉय यू हैव टू डू दिस, बीइंग अ गर्ल यू हैव टू डू दिस। तो वो उस लिमिटेशन से फिर बाहर नहीं आ पाते। खैर नहीं हो। इज इट क्लियर सो फार? तो जो सेकंड पॉइंट है इसका, जैसे भाई अगर गलती से किचन में चला जाए तो अम्मी अब्बू थोड़ा में गुस्सा करते हैं। आप होते हुए भाई, एग्जैक्टली वर्दा, आई अप्रिशिएट, ये बिल्कुल इनकी बात ठीक है, ऐसे ही है। तो ये कोई आपके साथ नहीं है, ये हमारे, मुझे भी देखिए हमें भी इसी तरह ट्रीट किया जाता था कि वो हम आते थे तो अम्मा जो है वो बहनों को कहती थी कि वो भाई तुम्हारा है उसको ये करो। तो वो अम्मा ने हमें तो कुछ भी नहीं कहा कि भाई तुम अपना काम अपना खुद कर लो ना। ठीक है, बहन भी तो थकी हुई है, वो भी तो स्कूल से आई है फॉर एग्जाम्पल, या उसने भी तो बाकी काम किए हैं। तो आप हमेशा फीमेल को कहते हो कि कंप्रोमाइज करे, आप मेल के कंप्रोमाइज उसको तो वो सिखाते ही नहीं है कि उसने भी करना है कोई। हाँ ठीक है। लेकिन देखिए ना बात वही है ना, कायनात, भाई अच्छे तो होते हैं, लेकिन अगेन वो डिफरेंट फैक्टर्स है ना कि कल्चर भी तो सपोर्ट करे ना भाई को। चले ये ना आप ऐसे ही अब गप्पे मार रहे हैं सारे, रियलिटी सारी डिफरेंट है। चले या नहीं हो, अगर तो कायनात ऐसा है तो भाई दैट्स वेरी फाइन। हाँ वैसे कुछ भाइयों को होता है शौक, ये वैसे आपकी बात ठीक है। हाँ कुछ मेरे कजन है वो बड़ा जबरदस्त करते हैं, वो भी जो है ना खुद ही बनाते हैं। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को होता है उनका वो हो जाता है डेवलप। ठीक है। हाँ खास तौर पे ये जो जिन लोगों को शौक होता है ना ये शिकार वगैरह का और ये वो, तो वो मेरा ख्याल है उसमें वो हो जाता है। हाँ चले, ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके।
चले नेक्स्ट, तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि जो लिबरल फेमिनिज्म है, लिबरल फेमिनिज्म चैलेंज करता है अनजस्ट हायरार्की। व्हाट डू यू मीन बाय हायरार्की? इसमें रजिया रसूल हम पढ़ रहे हैं लिबरल फेमिनिज्म। यस, दैट इज एग्जैक्ट वर्ड फरहान, शाबाश। तो हायरार्की कहते हैं आपकी रैंकिंग को, कि जो लिबरल फेमिनिज्म है वो अनजस्ट हायरार्की को चैलेंज करती है। ठीक है, कि रैंकिंग में आप मेल को सुपीरियर दिखाना और फीमेल को इन्फीरियर दिखाना, दिस इज नॉट फेयर। ओके, अब उसकी एग्जांपल क्या है कि आप ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल पावर एंड कंट्रोल रिलेशनशिप, क्योंकि ये मेल है तो ये हमेशा आपको सही गाइड करेगा, ये ऑर्डर दे सकता है। ये आप फीमेल है तो इसलिए आपको सबमिसिव होना है। बीइंग अ फीमेल आपको हमेशा कंप्रोमाइज करना है, और बीइंग अ फीमेल आपको टॉलरेट करना है। ठीक है, तो मेल जो अग्रेसिव भी है, असर्टिव भी है, सारा कुछ है, तो एवरीथिंग इज फाइन। ये तो नबील साहब की जब शादी होगी ना, तो नबील ने कहना है मैंने जिंदगी में कभी काम नहीं किया। ठीक है, उससे पहले नबील जो है ना, ये अब अभी जैसे कर रहा है। एनीवे, तो ये लिबरल फेमिनिस्ट ये कहती है कि जो मेल और फीमेल हैं, तो बिकॉज उनके पोटेंशियल सेम हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज को बायोलॉजिकल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो सोसाइटी में हायरार्की है, एग्जिस्टिंग हायरार्की, दिस इज नॉट फेयर। तो इन्होंने उसको हायरार्की को चैलेंज किया। ठीक है, ओके। और इन्होंने जब हायरार्की चैलेंज होगी, तो एट द सेम टाइम वो हाउस होल्ड में हो, वो आपका एक जो कंजुगल रिलेशनशिप हो उसमें हो, वो आपका नेबरहुड हो, वो आपका एजुकेशन सिचुएशन हो, तो कोई भी जो आपका सफेयर है जिसमें अनजस्ट हायरार्की है, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो जो लिबरल फेमिनिस्ट है, इन्होंने किस चीज पे एम्फसाइज किया कि जो इंडिविजुअल है दे शुड बी गिवन फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस कब होगा? जब अनजस्ट हायरार्की नहीं होगी। अनजस्ट हायरार्की कब नहीं होगी? जब बायोलॉजिकल बेसिस पे इंडिविजुअल को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इनका ये ख्याल था, लिबरल फेमिनिस्ट जो हैं, इन्होंने कहा कि दे शुड बी अटोनमी। ओके, अब अटोनमी की जब हम बात करते हैं, लिबरेशन, अटोनमी मीन्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, लिबरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। इन्होंने ये कहा कि अगर आपको ये जो है अनजस्ट हायरार्की है, ये जो अनइक्वल रैंकिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स हैं, उसमें फीमेल्स किस तरह से विद इन द सिस्टम इंप्रूव कर सकती हैं, या किस तरह से फीमेल अपनी एम्पावरमेंट को इंश्योर कर सकती हैं कि उनको वो काम करने चाहिए जो उनको अच्छे लगते हैं। ठीक है, कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करे। Not necessarily they're going to leave themselves at the mercy of men. Okay, so you have to decide by yourself that what is suitable to you, what makes you more lucrative, and what makes you more interesting, and accordingly you have to exert your efforts. So stop taking dictations from men, what is good, what is bad. So you have to decide good and bad by yourself. Only then you can get empowered. Only then you are going to express your potentials, and you are going to negate this impression that women, they are subordinate to women. Okay, so you have to rely on your own individual freedom. फिर इन्होंने ये कहा कि ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, ये इंडिविजुअल फ्रीडम इट शुड बी एट ऑल लेवल्स। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कि वो माइनर से लेके आपके जो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं, उसमें भी ये आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन टर्म ऑफ चूजिंग कलर, सब्जेक्ट्स, ऑक्यूपेशन, अपीयरेंस। ओके, सो इन एवरी स्फीयर जो फीमेल्स हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करें, एंड दे हैव टू डिसाइड थिंग्स बाय देमसेल्फ, के where they are going to, where they have to exert the efforts and what they really demand. ओके, तो उनका ये था कि ये अगर फीमेल इस तरह से करेंगी, तो इसमें क्या होगा कि वो जो उनमें रैशनैलिटी और मॉरल एजेंसी, सेल्फ रियलाइजेशन, वो सारी चीजें उनमें डेवलप होंगी। ठीक है, और मोस्टली क्या होता है कि ये जो पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की अनजस्ट हायरार्कीज को प्रमोट करता है, जिसमें फीमेल को ट्रेन किया जाता है फॉर सर्टेन रोल्स, एंड अकॉर्डिंगली शी इज गोइंग टू एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ मेन। इन्होंने ये कहा कि जो पेट्रियार्की है, फॉर एग्जाम्पल, तो जो पेट्रियार्की को आपने चैलेंज करना है, अपनी इक्वालिटी को गेन करना है, तो यू हैव टू सेट योर ओन स्टैंडर्ड्स। आपने बताना है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड।
एट द सेम टाइम जो लिबरल फेमिनिस्ट थे वो ये समझते थे कि वो women should not be like men in order to qualify for moral consideration. कि जिस तरह अभी ये एग्जांपल आयशा लाल दे रही थी कि लड़कों ने ऐसे बैठना है लड़कियों ने ऐसे बैठना है तो देन इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड मॉरल, कि इन्होंने कहा कि मैं लड़कों की तरह बैठती हूँ तो मुझे कहा जाता है आप क्या लड़कों की तरह बैठ जाती हो। ठीक है, तो गर्ल्स जो होती हैं दे नीड टू हैव देयर लेग्स जस्ट इन वन साइड। तो ये जो मॉरल कंसिडरेशन है गुड और बैड की, ये जो मोरालिटी है, हु इज गोइंग टू डिसाइड द मोरालिटी, दैट इज गोइंग टू सेट बाय द सोसाइटी, एंड सोसाइटी दैट इज मोर patriarchal, that is dominated by men, and ultimately things they need to be decided on the part of men, what is moral, what is immoral. तो जो लिबरल फेमिनिस्ट थे, लिबरल फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि आप इस चीज से बाहर निकल जाएं। ठीक है, कि आप भी इक्वल हैं, आप भी रैशनल हैं, आप भी इतने पोटेंशियल्स हैं। तो इट डजंट मीन कि आपके जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं दे वुड बी कंसीडर्ड एज द हर्डल इन टर्म ऑफ यूटिलाइजिंग योर पोटेंशियल्स। ओके, फिर इन्होंने ये कहा कि जो लिबरल फेमिनिस्ट थे कि आपकी जो फीमेल्स के एम्पावरमेंट है, वो फीमेल के एम्पावरमेंट पॉसिबल है बाय ब्रिंगिंग रिफॉर्म इन सोसाइटी। सोसाइटी में रिफॉर्म्स कब आएंगी? जब आप पॉलिटिकल प्रोसेस में रिफॉर्म्स लाएंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस में रिफॉर्म्स कब आएंगी? जब आप वुमेन को इन्वॉल्व करेंगे। और अभी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें फीमेल उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती और उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो लिमिटेड है घर की हद तक। तो आप उनको पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व करवाएंगे जब आप उनको राइट टू वोट देंगे। तो जब फीमेल डिसीजन मेकिंग में आएंगी तो ऑटोमेटिकली दे वुड बी कंसीडर्ड इक्वल एंड दे आर गोइंग टू बी गिवन लेवल प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज एज वेल। और साथ जो लिबरल फेमिनिस्ट थे वो कहते थे कि दे शुड बी एक्सपेंडिंग ह्यूमन चॉइसेस। एक्सपेंडिंग ह्यूमन चॉइसेस मींस कि इंडिविजुअल्स दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो आप इंडिविजुअल्स को बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की बेस पे ना करें कि एक फीमेल है तो आपने माइंड में बना लिया, या अभी जो डिस्कशन अभी नबील से स्टार्ट हुई थी कि क्या फीमेल को अपॉर्चुनिटी मिले तो फीमेल वो काम कर लेंगी। भाई अगर उनसे काम नहीं हुआ तो वो नहीं करेंगी ना, अगर काम हो गया तो वो कर लेंगी। तो आप उनको अपॉर्चुनिटी तो दें, लेट women decide by themselves whether they are competent enough to go for certain roles or not. But not just in the beginning, you have shown your own narrow-minded approach and you are going to restrict their participation. You are going to segregate various professions and women that this is for boy, this is for girl. So that approach needs to be eliminated. So this is something that needs to be decided by women by themselves, that which recognition they want in terms of wages, in terms of work, in terms of profession, and things like this. And then stop judging individuals on the basis of their characteristics. Since she's a female, so that's why she's more suitable for caregiving services. Since she's a female, so she can perform very well if she's going to be given opportunity to serve in the medical field. So she's a female, so she would be more convenient in performing the teaching services. So not necessarily that you're going to associate yourself with certain biological identity, and accordingly, certain characteristics they're going to be attached with a particular sex. So all the characteristics they could be existing within the members of every sex, and this is wrong to judge individuals on the basis of their biological identity. Next, conscious raising. Liberal feminists were of the view, because you know very well what is a feminism. Feminism was empowerment of a woman, that women they need to be treated equal in line with the men. So not necessarily men they should be considered as a superior, and women they need to be considered as an inferior. Okay, for example, in our society, as we were going to discuss earlier as well, for example, if Razia is going to take more part in domestic role, and even if her brother visits the home, but still there's a more pressure by her mother that since you are female, although you have taken various classes and you have done so much physical work in home as well, you have entertained the guests as well, you have performed your very wonderful job in kitchen, you are tired, but since your brother has come home now, so at the same time you have to make more food for your brother. Although you are a female, but still you need to show more compromise, you need to show more willingness, and you need to show more benignness for your brother. So this is a conscious raising, that not necessarily all the time you need to be victimized. You need to get understanding that you are also a human being, you have also your right. You are not supposed to perform just the duties. You have to break the silence, you have to talk of your rights as well.
So if you're going to be victimized, and if you're going to be put in lower position, and you are not going to be provided equal opportunities in society, so you have to break the silence, and you need to take certain initiatives for your own empowerment. So if something is wrong, so women need to be realized that they need to be dealt in a bad way. So they need to be dealt in other way as well. So there would be normative approach, and it is only possible when they are more aware of their rights as well. So that is a conscious raising. Is it clear to everyone? Got it? Okay, thank you very much. Next. Then you could talk of opposed gender job market. Since individuals, they cannot be discriminated. And you can't say since you are female, so that's why you perform your services just in desk-oriented work. So since Nabil is a male, so that's why Nabil would be more suitable in performing more field work in the industrial field. So you can't make discrimination in sex for various professions as well. Since Nabil is a male, so it doesn't mean that only then he can make more participation just in certain sports and some certain other games as well. So let the individual decide with themselves whether they have some sort of potentials, whether they have interest, whether they can compete in various fields or not. So that should be the decision of individuals. And individuals, they should feel themselves more autonomous. Individuals, they need to realize themselves more powerful, and they need to pursue their profession on the basis of their own choices rather than on the basis of the dictations. And the last point is that the liberal feminism, I told you, they were not within the changing the existing system of society. Liberal feminists were of the view that you have to run the existing system, let the existing system run, but you need to go for some reform within the system. So if you're talking of the existing system, so there was a heterosexuality. Heterosexuality is a straight sexuality, that male female sexual orientation, male female preference. So liberal feminists, they were not going to oppose this. So they were within the existing setup. Yes, it needs to be accepted as well. But if heterosexuality was going to be supported by the liberal feminists, it doesn't mean they were in the favor of penis envy theory. Penis envy theory that was given by Sigmund Freud, and Sigmund Freud was of the view that this heterosexuality, that is a natural. Why this is a natural? Because ultimately that helps to overcome the inferiority complex of a female, because she's a powerless. This is because she's made powerless by the nature, and for which she has some sort of inferiority complex. And this point was elaborated by the radical feminists. We are going to discuss later on. But just for the time being, you can realize that the liberal feminism were in the favor of heterosexuality, but that heterosexuality was just for the sake of your continuity of your generation. Okay, but it doesn't mean it needs to get confused with the penis envy theory that was stated by the Sigmund Freud as well. Okay, so let's have a overview of the liberal feminists. So liberal feminists, they were in the favor of the educational reforms. They were in the favor of public participatory role. They were in the favor of ending sexual harassment. They are in favor of providing more healthcare opportunities. They were in the favor of providing and expanding the political opportunities of women, especially right to vote that would need to be granted to women. And they were in the favor of providing gender equality in all professions. So that was the summary of the liberal feminism. Got it? And if you're talking of the criticism against the liberal feminism, so I think when I'm going to teach you the other theories, so one theory that would be considered as a criticism to the other theory. So this is the same thing that you can do even by yourself as well. Got it? Clear? Is it clear? Okay, thank you very much. So do you remember any name in Pakistan who is a liberal feminist? Can you tell me name of any female who's a liberal feminist in Pakistan? Excellent. Shiri Mazari, well done. Or हाँ ठीक है नरेश, शाबाश। क्योंकि आसमा जहांगीर फौत हो गई है, तो आप ये कह सकें कि वो थी। ठीक है।
हिना रबानी खर, ये जो भी फीमेल्स के आपके माइंड में आती हैं नाम, वो सारे वो लगा दें। मलाला यूसुफजई, शर्मीनो बेचुनाय, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ठीक है, बेंजी भुट्टो एज वेल, शाबाश। अब आ जाते हैं रेडिकल फेमिनिज्म पे। अच्छा ये बताएं यार, आज आपका लेक्चर नंबर कौन सा है मेरे साथ, ताकि हमारी स्पीड से ज्यादा स्लो ना रहे, हमें थोड़ी स्पीड रखनी भी है, ताकि आपका सिलेबस भी तो कंप्लीट करवाना है ना। ये अच्छा लेक्चर 3 है, ठीक है, देन इट्स फाइन। ओके, जब हम रेडिकल फेमिनिज्म की बात करते हैं तो रेडिकल फेमिनिज्म क्या है, कि रेडिकल फेमिनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म वाज इन द फेवर ऑफ ब्रिंगिंग रिफॉर्म विद इन द सिस्टम। रेडिकल फेमिनिस्ट वर ऑफ द व्यू दैट यू डोंट नीड टू ब्रिंग रिफॉर्म विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, you have to replace the existing system with the new system. So they were of the view that if you're talking of the heterosexuality and you're going to talk of bringing reform within education, within the public affair, within the profession, something like this, so that would be the superficial analysis. So unless the root cause is going to be redressed, women they can't be empowered in society. So that's why they were more. You could say that they were more rigid, and they were showing more strictness in their dealings. Okay, so what were the issues which were to be redressed by the radical feminists? So they were in the favor of war against sex and individualism. They were in the favor of expanding reproductive rights, and they were going to challenge the traditional roles as well. And at the same time, yeah, this is more related. The last point is more related with the earlier one. So they were in the favor of breaking down the traditional roles. So traditional roles means that this role is for male, this role is for female, and traditional role is that the you could talk of the caretaking role. They could be associated with the women, and administrative role they could be linked with the men. So these traditional roles they were going to get challenged by the radical feminists. Can you tell me the difference between war against sex and expanding reproductive rights? What is the difference between the two? Can you volunteer? Can you do the differences between two? The first 2 points, war against sex and expanding reproductive rights. Okay, when you say war against sex, so what do you think, Razia? They prefer to stay away from existing system and replace it with the new one. हैं? बड़ा गोलमोल सा जवाब दिया रजिया आपने. Okay. Expanding reproductive rights, abortion rights, war against. No. Perceived conflict between societal pressure and normally the freedom to express one's sexuality. हाँ ठीक है युसरा, आपका थोड़ा सा बड़ा वो है, डिप्लोमेटिक आंसर है नहीं हो. यहाँ पे जब बात होती है ना वॉर अगेंस्ट सेक्स, तो उनका यहाँ पे सेक्स से मुराद हिट्रोसेक्सुअलिटी है, कि उनका ये था कि भाई फीमेल ने हिट्रोसेक्सुअल नहीं होना. ठीक है, वो ये समझते थे कि जो रूट कॉज है फीमेल्स की वॉलेशन की, वो तो सेक्स है. सेक्स जो है दैट इज बेसिकली द रूट कॉज ऑफ वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, और सेक्स इज अ साइट फ्रॉम वेयर वुमेन दे आर गोइंग टू एक्नॉलेज द पावर ऑफ मैन. तो उनका ये था कि फीमेल जो हिट्रोसेक्सुअलिटी है उसका बाइकआउट करें. ओके, दूसरा जो पॉइंट था कि एक्सपेंडिंग रिप्रोडक्टिव राइट्स, तो जब आपने हिट्रोसेक्सुअल नहीं होना तो फिर रिप्रोडक्टिव राइट्स कैसे एक्सपेंड होंगे, इसकी एग्जांपल क्या होगी. एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने हिट्रोसेक्सुअलिटी का बाइकआउट करना है, और द सेम टाइम आप कह रहे हैं कि आपने अपने जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनको एक्सपेंड करना है. हाउ इज इट पॉसिबल. हाँ शाबाश आशा, वेल डन. तो उनका ये था कि अगर ये करना भी है तो आर्टिफिशियल वे से करें, कि आप उनको डायरेक्ट एक्सेस ना दें. ठीक है, वो जो आप एक इंडियन मूवी भी आपने देखी होगी, विक्की डोनर और समथिंग लाइक दिस. ठीक है, वो है. ओके, अब आ जाते हैं डायरेक्ट इनके, जो है, अ, क्या कहते हैं, जो है, 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 जो है,
ठीक है, प्रोपोनेंट्स अगर हम बात करें कि जो रेडिकल फेमिनिज्म को सपोर्ट कौन कौन कर रहा है, तो एक तो उसमें सिमन द बोवे है। सिमन द बोवे की बुक थी द सेकंड सेक्स, दैट वाज रिटन इन द ईयर ऑफ 1959 एंड ओरिजिनली इट वाज इन अ फ्रेंच लैंग्वेज। ये पेपर में भी आया हुआ है, द सेकंड सेक्स वाज रिटन बाय, सो इट वाज रिटन बाय सिमन द बोवे। दूसरे नंबर पे जो ये था कि बेटी फ्रीडन जो थी, ये सिगमंड फ्रॉइड की बेटी थी, इसने बुक लिखी थी बेटी फ्रीडन ने फेमिनिन मिस्टिक, एंड दिस बुक वाज रिटन इन द ईयर ऑफ 1963। सो फेमिनिन मिस्टिक वाज रिटन बाय बेटी फ्रीडन। ओके। और फिर इवन मैरी डेली की जो बुक थी द चर्च एंड द सेकंड सेक्स टुवर्ड द फिलॉसफी ऑफ वुमेन्स लिबरेशन, और केट मिल्लेट की जो बुक थी सेक्सुअल पॉलिटिक्स। तो ये ओवरऑल जो आप केट मिल्लेट का नाम याद कर लें, मैरी डेली का याद कर लें, बेटी फ्रीडन का कर लें, और सिमन द बोवर का याद कर लें, दे वर द रेडिकल फेमिनिस्ट। अगर हम बात करें कि जो रेडिकल फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म के क्या मेन प्रिंसिपल्स थे या इनकी क्या पिलर्स थे इनके आइडियोलॉजी के, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच रेडिकल फेमिनिज्म दैट वाज गोइंग टू सपोर्ट इट। तो रेडिकल जो फेमिनिस्ट थे, ये कहते थे कि जो वुमेन हैं, दे वर हिस्टोरिकली द फर्स्ट ऑप्रेस्ड ग्रुप, कि उनका ये ख्याल था कि इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि जो फीमेल हैं उनको ऑप्रेस किया गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्रेशन? डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है और ऑपरेशन का क्या मतलब है? हाँ, शाबाश, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट होता है ना कि आपको वैसे वो आइसोलेट कर देना, और ऑपरेशन का मतलब होता है कि साथ वायलेंस का विक्टिम भी बनाना। ठीक है। एक होता है कि फॉर एग्जांपल आपको डिस्क्रिमिनेट करना है आपके रोल्स में, फिर ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा वर्क आप पे डाल देना, तो वो उसमें ऑपरेशन में आ जाएगा। ओके। उन्होंने कहा कि एक तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वुमेन दे हैव बीन ऑप्रेस्ड इन सोसाइटी। दूसरा ये था कि वुमेन जो ऑपरेशन है ये मोस्टली हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता रहा है, इस चीज को रियलाइज करें फीमेल्स। ठीक है। और क्योंकि ये हर सोसाइटी में है और ये डीपली रूटेड है, तो जब तक आप रिफॉर्म्स की जो बात करते हो, जिस तरह लिबरल फेमिनिज्म ने ये कहा था कि फीमेल्स को विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम रिफॉर्म लानी चाहिए, तो उनका ये ख्याल था कि दैट कुड नॉट बी द अल्टीमेट सोल्यूशन। तो rather than bringing reforms within the existing system, you have to change the existing system with the new system. ठीक है। ओके। और फिर इनका ये ख्याल था कि जो रीजन है दैट इज रिलेटेड विद द पेट्रियार्की, कि जो पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की इज द रूट कॉज ऑफ वुमेन ऑपरेशन, और पेट्रियार्की ही द रूट कॉज फॉर वायलेंस, रेप, सेक्सुअल अब्यूज, प्रोस्टिट्यूशन, सडिस्टिक पोर्नोग्राफी, इन्फेंटिसाइड्स और क्लाइरेक्टोमी, सती, ब्ला ब्ला ब्ला। उनका ये ख्याल था कि जो फेमिन इस वायलेंस का विक्टिम बनती हैं, उसकी रूट कॉज एक है और वो है पेट्रियार्की। तो जब तक आप पेट्रियार्की को खत्म नहीं करेंगे, तब तक विमेन की एम्पावरमेंट नहीं होगी। और जो पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की कैसे खत्म होगी? उनका ये ख्याल था कि जो पेट्रियार्की को चीज सपोर्ट करती है वो हेट्रोसेक्सुअलिटी है। सो सेक्स इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ वुमेन्स ऑप्रेशन इन हेट्रोसेक्सुअलिटी। तो वुमेन का इस चीज को वुमेन अंडरस्टैंड करें कि व्हाई दे आर गोइंग टू बी ऑप्रेस्ड इन सोसाइटी, व्हाई दे आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड ऑन लोअर पोजीशंस, why there is a much stratification, why there is a vertical division of society all the time, why women they are going to be put on the low rank. So the main reason is that men they're going to consider themselves as dominant. And what is the side from where men they're going to establish their hegemony? So that is a sexual side. And that is a cause of women's oppression. जिसकी basis पे जो radical feminists थे, they were in the favor of educating women that they do not get engaged in any activity through which they are going to become more appealable in the eye of men. Because if you're going to get engaged in any activity where you're going to be attracted by men and men they wanna pursue you, so the ultimate objective is that they wanna drive sexual pleasure and they wanna mistreat you,
So the main reason is that they were going to support bra burning campaign. Bra burning campaign was like that you need to make boycott of all the feminine objects, all the objects which were going to get associated with the women. So women, they need to make more boycott of it. So women should not support. Is it clear? Okay, thank you very much. Okay. So this is the second point was that first of all, sex is a fundamental cause of women's oppression, and the next thing is that why they were against the heterosexuality. So they were against basically the positional hierarchy. What positional hierarchy means that radical feminists were of the view that in all affair, so there is a positional hierarchy. There is a vertical division. One is superior and one is inferior. And again, here I'm going to quote certain words of Simone de Beauvoir, and Simone de Beauvoir, who was the author of the book The Second Sex. So she describes historical and sociological reasons for the general failure to end gender oppression. And she also locates these realities in interpersonal relations as well. Okay. And again, if you're talking of the positional hierarchy in terms of your heterosexuality, so you are going to talk of the alpha position and you are going to talk of the beta position as well. And what do you mean by alpha? What do you mean by beta? You know very well. So again, why they were of the view of opposing the heterosexuality? Because again, the heterosexuality is going to support the positional hierarchy. And again, this is a positional hierarchy that is going to subjugate the interest of women as well. And they were in the favor of rejecting the patriarchal norms because they were going to believe that the patriarchy is the root cause of women's oppression, and patriarchy drives its base from the from, you could say, from the sexual interest as well. So they were in the favor of rejecting the patriarchal norms. What do you mean patriarchal norms? Because norm is the standard of behavior, how the particular behavior that is going to be accepted. And when you're talking of the certain sexual behaviors, how they're going to be accepted in a patriarchal society, so that is a patriarchal norm. So again, here I'm going to quote the word of the Simone de Beauvoir, and Simone de Beauvoir, who was author of the book The Second Sex, she described what is sex. So sex is an affair in which men are trained to see themselves as a naturally dominant, and women are naturally passive. So that is a norm that is going to be educated, that is going to be conveyed, and that is going to be intimated to the individuals of society, that men are dominant and women, they are more passive. Again, when you say they are dominant, there could be some sort of certain biological reasons as well, because of their male genitalia and because of their when you're talking of the women, because of their again genitalia, so they are going to have the more passive role. So the thing is, this is something that is going to be pursued and that is going to be educated by the patriarchy. Okay, so they were of the view that you have to reject the patriarchal norm in which women, they're going to be trained in this way, that they are more passive, they are more dependent, and they are more vulnerable. And men, on the other hand, they are more dominant, and they are going to enjoy and they're going to exercise their authority as well. Okay, so since men have the advantage of the physical force, they use it to establish control over women. This, according to radical feminists, is the reason of the almost universal existence of the patriarchy. So again, initially, we were going to have this discussion as well, that yes, men and women, they have some sort of biological differences. For example, if Nabil is going to get involved in fighting with the female, so comparatively, you could say that Nabil would be having some sort of advantage because being a male, his body is a more muscular. He can apply force to a greater extent as compared to a female. It makes sense that there are certain biological differences. But these biological differences, they are going to be utilized in a negative way by patriarchal society. And these potentials, they are going to subjugate a woman. And these potentials, they are going to be pursued in this way where you're going to educate men that they're powerful and they should establish their hegemony over women. So by treating women in a bad way, they drive pleasure. And again,
they drive pleasure from the sexual activity, because yes, you can say there are the biological differences. So the experience that is going to be driven by a male is different from experience that is going to be faced by a female. So both have some sort of biological differences, due to which they are going to have their own, you can say that they're going to have their different exposures as well, and through which they are going to make individual realize one is superior and one is inferior, and that is the hallmark of a patriarchy. So again, there's a need of conscious raising. This conscious raising is different from the liberal feminism. In liberal feminism, there was a conscious raising that you have to break your voice and you have to take stand for your rights. That if something is wrong, if you're going to be mistreated in society, if you're going to be discriminated in society, so you have to speak of your rights. And you have to feel yourself free in terms of choosing your professions, what you are, okay, what you want to do, what you want to pursue, you have to feel independent. So that was a conscious raising. Here the conscious raising was that how patriarchy that is going to make you more submissive. There's a more conscious raising regarding patriarchy, that how patriarchy exploits the dignity of a female, how patriarchy is going to use female as a child producing machine, how patriarchy is going to protect the sexual interest of a man. So that was a conscious raising here, and it could be different. Both theories, they're going to focus on a conscious raising, but a little bit there is a difference in terms of the scope of the conscious raising. Is it clear to everyone? Okay, thank you very much. So next point of radical feminism was that if you're talking of the division of societies, so normally society is going to be understood on the basis of economic factors. You can say upper class, middle class, and lower class. Then you're going to bring reform from the upper class and middle class and lower class, things like this. So radical feminists have the view that society, in order to enjoy, in order to provide equality to individuals, in order to deal individuals on equal footing, it is essential that society needs to be understood on sex factor rather than on economic factor. Got it? So you need to realize that individuals, they're going to be judged on the basis of sex. So yes, you need to realize women as a one class on the basis of their sex. So stop making reforms on the basis of the economic structure in society. So this was, you can say that it was a more imaginative concept. That was a more utopian idea, that society needs to be understood on the basis of the sex differences rather than on the basis of economic differences. Got it? Is it clear to everyone? Whenever you have any confusion, please feel free to ask. Okay? Don't feel shy. Next. Okay. So they were of the view men create and maintain patriarchy not only because they have the means to do so, the physical power, but because they're doing so serve their own interest in multiple ways. Women are exceptionally effective means of satisfying the male heterosexual desires. Okay, so they were of the view, basically, again, if I'm going to talk of the division of society, that how society needs to be dealt. So they were of the view that this is the main important way, that this is subjugation, there's a more discrimination, there's a more oppression, and there's a more victimization on the basis of sex. So that's why society needs to be understood on the basis of sex factor rather than the economic factor. So again, from the Simone de Beauvoir, the second sex, because if you're talking about the radical feminist, the more notable contribution comes from the Simone de Beauvoir. And again, when you're talking of the what are the reason for the second favor feminism, so again, you're going to refer to Simone de Beauvoir. And Simone de Beauvoir played a key role for the start of the radical approach in women empowerment. So this is one of the reasons that most of the quote I'm going to link with the Simone de Beauvoir under radical feminism. So Simone de Beauvoir mentions in her book The Second Sex, and she's going to reflect her thinking that the act of sex in the context of a gender oppression, right? That if you're talking of oppression of women, so it could be linked with the act of sex. So both are directly proportional, both influence each other, and both cannot be understood in separate zones. So that is a collective. If you're talking of a women
if you have to understand the concept of women oppression, so it is directly related with the act of sex. Okay, so this is the act of sex where women might find it humiliating to lie under the man and can be penetrated by him and tense up it in a frigidity. Men at the same time will claim their moral aggressiveness. So that's why I'm going to say that yes, there are certain biological differences, and these biological differences they're going to provide different experience to the different members of sex. And one sex, on the basis of their biological differences, takes this impression that he's a more powerful and he's a more dominant. And on the other hand, one member of sex that is going to be realized that more passive and more weaker. At the same time, that individual is going to be trained in this way that that individual has to accept the hegemony of a male. So Simon de Beauvoir was going to give conscious raising regarding heterosexuality, and again, that is a positional hierarchy in a heterosexuality that is going to oppress women as well. So their bodies are essential to be production of the children who satisfy the both practical and neurotic needs of a man. Moreover, women make an invaluable labor force, one which comes without a cost. Okay, and they are also looked upon the ornamental signs of males. So this is almost the same thing, that this is a patriarchal norm that is going to educate, that is going to prepare women for certain role, resultantly that come up with certain oppression. Okay, so radical feminism was of the view men are the problem. Okay, so basically they were going to believe that a patriarchy is the root cause of women's oppression. And why patriarchy is the root cause of women's oppression? Because ultimately it is going to be linked with the act of sex, that is the heterosexuality. So when we're talking of the patriarchy, so in patriarchy, patriarchy means a system that is run by men. So men are the problem, and women they need to understand that men are problematic by themselves. So this is one of the reasons that a society that needs to be understood on the basis of the sex differences rather than the basis of economic differences. Okay, so it means men under a patriarchal norm, they are going to be educated. They are going to be given certain environment, and certain brainwashing has been done in this way that they have to drive pleasure while inflicting women. So, and again, from where they're going to consider themselves as a powerful. For example, if men is going to get engaged with Fakhr, so what do you think? Whether Nabil would say, "I am a male. At the same time, I need to gain the victory as well, and I need to make myself successful." But yes, if you can say, if Nabil is going to get engaged with Aisha, maybe he's going to feel himself more insecure since I am a male. So at the same time, I have to win at any cost because I can't get defeated by Aisha. Otherwise, I have no other chance to survive in the society. So it means if a male is in confrontation with the female, only then he's going to claim his masculinity. If a male is going to get engaged with a male, so there's a no concept of masculinity. So even Fakhr is going to lose, or you could say that Nabil is going to get loose. So that's not an issue. So overall, both are men. So there's a no concept of masculinity. So masculinity concept emerges when a male gets engaged with the female. So they were of the view men are the problem because they don't want to treat you in a kind way. They don't want to give you more respect. They don't want to take care of the dignity of your rights, and they drive pleasure while violating your rights. So men are the problem. Got it? And this is the hallmark of patriarchy. Do you have any questions so far? Do you have any questions? No question. Challenge. Thank you very much, Yusra. I appreciate you a lot. Do you want to have a break? Should we continue, or do you want to have a break? Challenge. Thank you very much, Sadia. चलें कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ते हैं, अपना 15 मिनट की ब्रेक कर लें. चलें, let's have a 15-minute break, please.
जी, अस्सलाम वालेकुम. Should we start? Is everyone back? चलिए, okay. Thank you very much. Okay. तो next. इनका ये था कि जो women हैं, they may do a better job than men traditionally have. क्योंकि लिबरल फेमिनिज्म ये समझता था कि फीमेल्स जो हैं, फीमेल्स को पब्लिक पार्टिसिपेशन तक एक्सेस होनी चाहिए. रेडिकल ये कहता है कि जस्ट एक्सेस इज नॉट सफिशिएंट until unless women they're going to be given certain dominant positions in public roles. तो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर फीमेल जो हैं, अगर फीमेल पब्लिक रोल में आ भी जाए तो फीमेल सारी इधर बैठी हो और मेल उनको लीड कर रहा हो, सो अगेन दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ वुमेन. तो वुमेन का डोमिनेंट होना पब्लिक रोल में दैट इज मोर एसेंशियल, उनका लीडिंग रोल में आना चाहिए. ठीक है. और नेक्स्ट जो था, ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. नेक्स्ट उनका ये था कि जो रोल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज जो हैं, they must not adopt certain roles based on their biology and gender. तो अगेन जो रेडिकल फेमिनिज्म है, रेडिकल फेमिनिज्म भी इस चीज को, जिस लिबरल ने कहा था ना कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरह रेडिकल फेमिनिज्म भी ये बिलीव करता है कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं. और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं है कि वो जो फीमेल हैं वो इंफीरियर हैं, या वुमेन जो हैं दे हैव लेस पोटेंशियल्स, दे हैव नो सच कैलिबर टू compete विद द मेन. तो इनका ये ख्याल था कि जो आपके रोल्स हैं वो दे शुड नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बायोलॉजी. ठीक है. जिस तरह फॉर एग्जांपल ये बात करते थे कि जो फीमेल्स हैं इसमें जो ब्रा बर्निंग कैंपेन्स, आई थिंक लाइक दिस, कि नॉट नेसेसरली कि वुमेन जो हैं दे नीड टू गो फॉर सर्टेन रोल्स जिसमें दे आर गोइंग टू एक्ट फॉर एंटरटेनमेंट इन द आई ऑफ अ मैन. तो उन्होंने कहा था कि वो उनकी ऑब्जेक्टिफिकेशन बंद होनी चाहिए. और इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल्स दे नीड टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट बिकॉज दे हैव बीन गिवन सर्टेन सेक्सुअल आइडेंटिटी, सो इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एन हर्डल. ठीक है. और इन्होंने जो डिमांड किया वो ये था कि ये जो पेट्रियार्की है दैट इज गोइंग टू make brainwashing of the society, and that is going to encourage individuals to adopt role on the basis of their biology. And again, when they're going to believe that what is more dangerous for women, especially talking about patriarchy. So patriarchy is something that is going to you could say that they're going to oppress the conditions of women in society. When you're talking of a capitalism, so that is a social structure and that is an economic structure. If you're talking of a capitalism, and in capitalism, again, this is something because what is a capitalism? In capitalism, you could say the ownership over the products that is related, that is a pertinent with the private individuals. Okay, so again, the purpose of the feminism is, but the feminists, they were against the capitalism as well, that this economic system exploit women. Because in a capitalism, only one class is going to get more domination. That class has resources, and that is upper class. And who would be in upper class? Men would be falling in upper class because they are going to have their property rights and things like this. When you're talking of a women, so women are exploited in capitalism because they're going to be given certain laborer roles. And in performing laborer roles, they're not going to be given due reward for their services, and in return that is a male. Okay, so that is a male who has access to resources and means of ownership on the basis of which women they're going to be exploited. So although in patriarchy there is exploitation of women, even if you're talking for capitalism there is exploitation of women. If you have to choose between the two, which is a more severe problem for women and which problem has a more for reaching effects on against women. So again, you could say that if you have to choose between the two, then a patriarchy would be considered as a bigger problem as compared to capitalism. I'm not going to say that a capitalism is not something that is not going to express the interests of the women. Both are exploiting, but patriarchy is a more dangerous. Can you tell me why patriarchy is going to be considered as a bigger problem as compared to the capitalism? What could be the possible reasons? Why patriarchy is going to be considered more severe in terms of impacts as compared to capitalism? No, oppression is in both systems, Yusra.
Have you got my question or not? Sana, this is a more general and sweeping statement. Controls women how? Because both system they control women. Sana Fatma. Have you got my question by the way? My question is both the system exploit women, but why patriarchy is considered more problematic for women as compared to capitalism? I think you might be unable to answer. Okay, anyhow, patriarchy is going to be considered more bigger problem because in patriarchy there is economic exploitation, there is a physical exploitation, there is a sexual exploitation, there is a more, you could say, psychological exploitation as well. Gender-based discrimination, inequality, where is capitalism contributing socioeconomic disparities? Yes, thank you very much, Yusra. That's great. So if you're talking of a capitalism, so there is a just one exploitation, that is a economic exploitation. Okay, that for example, if you perform your services, so you're not going to be given due reward for your services, for your labor, and ultimately, the fruit of your labor that is going to be exploited by the industrialist. Okay, but again, in patriarchy, it is a mixture of all the oppressions, form the various forms of oppressions. Okay, so not necessarily economic, at the same time sexual, psychological, economic, and physical as well. Clear? Can you move to next slide, please? Is it okay to everyone? Do you have any confusion? Do you have any confusion? Thank you very much. Okay, so the root of women oppression is in the patriarchal again. So they were going to decide what is the problem. They were going to realize that men are the problem. They were going to identify the problem in a system, that the patriarchy is the more structural default in society, and how patriarchy needs to be eliminated. It would be it needs to be understood the engagement in the act of sex. Okay, at the same time, especially if talking for liberal feminism, so liberal feminists were of the view that you cannot go for the existing system, you can go for some sort of more reforms. And reforms could be done in the political process, in educational fields, and in the more economic fields as well. But here, they were not in the favor of a legal system. That if you bring reforms within the legal system, you're going to make a law, it doesn't mean that is going to empower women. So the only solution, that whether you need to go for certain reforms in a legal system, enactment of a new legal system, or you need to go for eradication of patriarchy. So they were in the favor of eradication of patriarchy. So legal system cannot be considered as a solution to protect the interest under patriarchy. Islam is the, क्या बात है आसफ साहब, माशाल्लाह बड़े नेक आदमी हैं तो सीधा. Islam is the end every solution. Islam is the end every solution. Women should be satisfied, otherwise they will answerable to Allah. The Islamic right, क्या बात है. आसफ साहब तुसी अपनी खैर मनाओ, अल्लाह ताला उनको भी जो है ना वो करेगा. तो आपकी यार वो बात आपकी ठीक है. इस्लाम, देखें हम मुसलमान हैं, हमारा ये ब्लाइंड फेथ है, हम उसमें ये तो कह ही नहीं रहे ना. डोंट गेट कंफ्यूज विद द इस्लाम. हम अभी वेस्टर्न जो थिंकिंग है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी, हम उसको पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो जो ये चीजें कहते थे हम वही कहेंगे ना. हम उसमें अपनी तरफ से तो अभी कुछ नहीं कहेंगे कि इन्होंने ये कहा. जो उनके पॉइंट्स होंगे ABCD वट एवर, so this is my responsibility to reflect their viewpoint, that what was the radical feminism. You can criticize later on, but not in the beginning. Okay. और दूसरी बात ये है, जी जी नेक्स्ट अगर रजिया हम वही करेंगे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म रेडिकल के बाद. तो अभी क्योंकि इस्लाम में डिस्कशन नहीं है, ठीक है, डिस्कशन आपकी सोशल साइंसेस में होती है, रिलीजन में डिस्कशन नहीं होती. इसलिए अभी आप रिलीजन को थोड़ा सा साइड पे रखें. A woman of letter said, क्या बात है शलाल, पढ़ना है ईमान ही ले आना. ठीक है, अच्छा जेंडर स्टडीज में
ठीक, गॉट इट। ये कौन सा टॉपिक है, मेन हेडिंग है रजिया? ये भी हम रेडिकल फेमिनिज्म पढ़ रहे हैं। रेडिकल फेमिनिज्म के हम जो उनके हैं ना, इसमें अगर हम बात करें कि उनके जो टेनेट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं रेडिकल फेमिनिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो उनका ये था कि ये वही चीज है, उसी एक्सप्लेनेशन है, ये अब कर लेंगे। नेक्स्ट। तो जो रेडिकल फेमिनिस्ट थे, अच्छा, जिस तरह लिबरल फेमिनिज्म था ना, लिबरल फेमिनिज्म ने कहा था कि आपकी इंडिविजुअल अप्रोच होनी चाहिए, ऑटोनमस अप्रोच होनी चाहिए, और इंडिविजुअल्स अपने अपने डोमेन में इंडिपेंडेंट, जो उनकी इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर करें। तो उसमें क्लास स्ट्रगल की बात नहीं है। रेडिकल फेमिनिज्म जो है ये ग्रुप स्ट्रगल की बात करते हैं। ठीक है, ये क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, ये सिस्टरहुड की बात करते हैं। इनका ये ख्याल था कि अगर पेट्रियार्की इज अ प्रॉब्लमेटिक, तो आपने अगर हेट्रोसेक्सुअलिटी का बाइकआउट करना है तो फिर सारी फीमेल इकट्ठा डिसीजन लें। ये इंडिविजुअल लेवल पे एक्शन लेने से फीमेल्स की एम्पावरमेंट नहीं होगी। तो इसलिए इन्होंने जो ग्रुप ग्रुप एफर्ट है, इन्होंने ग्रुप एफर्ट की बात की, कलेक्टिव अप्रोच की बात की, कि अगर वो उस तरह से नहीं होगा तो फीमेल्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी। सिमिलरली जब हम बात करते हैं इनकी प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी के, तो ये जो प्रोस्टिट्यूशन है उसके सपोर्ट हक में थे, अगेंस्ट थे? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक, दे वर इन द फेवर ऑफ प्रोस्टिट्यूशन? ओरिजिनली लॉ, यस, थैंक यू वेरी मच। तो ये उसके भी, प्रोस्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है, क्योंकि इनका मेन मानना ये था कि भाई आपने हिट्रोसेक्सुअल नहीं होना। तो जब हिट्रोसेक्सुअल नहीं होना तो वो आपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी नहीं होना। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि आप जो प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी है उसके भी अगेंस्ट हो, क्योंकि अगेन ये फेमिनिन ऑब्जेक्ट्स होंगे ना। तो आप हर वो चीज जिससे आप मेल को अट्रैक्ट करें उसका बाइकआउट करें, क्योंकि वो कहते थे कि जो एग्जिस्ट सेक्सुअलिटी इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द मेल पावर इन विच अनइवन जेंडर रिलेशंस आर कंस्ट्रक्टेड, अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसलिए इनका आप उसका भी बाइकआउट करें। नेक्स्ट, फिर अगर हम बात करें इनकी कि जो कमर्शलाइजेशन है, ऑब्जेक्टिफिकेशन है, कि फॉर एग्जांपल फीमेल को एज अ ऑब्जेक्ट दिखाया जाता था वेरियस एड्स में, और अगेन उनको एक एसोसिएट किया जाता था विद सर्टेन थिंग। तो अगेन उन्होंने ये कहा कि जो फीमेल हैं वो फेमिनिन ऑब्जेक्ट्स का बाइकआउट करें। जब फेमिनिन ऑब्जेक्ट्स का बाइकआउट करेंगी तो डेफिनेटली वो हर वो चीज जो कि मेल के लिए सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका भी वो बाइकआउट करें। तो जो लेस्बियन फेमिनिस्ट हैं वो बेसिकली फिर इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हुए ड्यूरिंग द रेडिकल फेमिनिस्ट। ठीक है, और उनका ये था कि ये जो आपके एरोटिक पॉलिटिकल कमिटमेंट्स ऑफ वुमेन इज एसेंशियल फॉर द बैटल अगेंस्ट पेट्रियार्की, कि जब तक अगर आपने नहीं करना, आप इससे बाज नहीं आएंगे, और कलेक्टिवली आप जो है वो इसका डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक वेमेन की एम्पावरमेंट नहीं होगी। और उनका ये ख्याल था यहाँ पे, वो मेरे अगली स्लाइड में आएगा। अब आ जाते हैं सेक्सुअलिटी पे इनका क्या व्यू था। तो जहां पे ये फिर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, सेक्सुअलिटी पे इनका ये ख्याल था कि व्हाट इज सेक्सुअलिटी बाय द वे, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअलिटी? यस, ठीक है, तो जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो दैट इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस। ठीक है, अह, ठीक है, आप उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी की बात कर रही है मेरे ख्याल लिशबा। ठीक है, ओके, तो इनका ये ख्याल था कि जो वेमेन है, वेमेन में सेक्सुअलिटी नहीं है, सेंसुअलिटी है। ठीक है, तो जो सेक्सुअलिटी है उसके लिए यू रिलाई ऑन द मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स। When sensuality, you are going to satisfy your feeling with the member of your own sex. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ये फिर सेक्सुअलिटी, जब हम उन वो प्रेफरेंसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक है रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म और दूसरे है रेडिकल कल्चरल फेमिनिज्म। जो रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म है, जिसमें जिसको सपोर्ट करती है शूला मिथ फायरस्टोन, जिसकी बुक भी थी डायलेक्टिक ऑफ सेक्स।
ठीक है। तो उसने ये कहा कि ये जो बायोलॉजिकल इनइक्वालिटीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और जब तक आप बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी को एलिमिनेट ना करें तब तक फीमेल एम्पावर नहीं हो सकती। और बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी कैसे खत्म हो सकती है कि उनका ये ख्याल था कि जो मेल हैं वो भी मेंस्ट्रुएशन को एक्सपीरियंस करें, और जो फीमेल हैं इवन दे नीड टू गो फॉर रिमूवल ऑफ देयर मैमरी ग्लैंड्स, कि हर वो चीज जो कि बायोलॉजिकली आपको डिस्क्रिमिनेट करे आप उसका बाइकआउट कर दें। उनका ये ख्याल था कि ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं हर चीज में ये बेस बनते हैं, तो आप ये जो बायोलॉजिकल इनइक्वालिटी है इसका बाइकआउट करना बड़ा जरूरी है। तो एनीहो इन्होंने फिर जो रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म है, रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म ने डीसेक्सुअलाइजेशन की बात की। डीसेक्सुअलाइजेशन मींस कि ये जो आइडेंटिटी असाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, तो इन्होंने कहा ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको डिस्क्रिमिनेट करती हैं वेमेन को उसका बाइकआउट करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने डिसेक्सुअलाइजेशन की बात की। फिर ये जो पोर्नोग्राफी है, अच्छा ये जो है ना ये पोर्नोग्राफी के हक में है, ये पोर्नोग्राफी के हक में है, और ये जो लेस्बियन सेक्स है उसके भी हक में है, हेट्रोसेक्सुअलिटी के ये अगेंस्ट है। ठीक है, सो दैट वाज अ रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म। अगर आ जाए रेडिकल कल्चरल फेमिनिज्म, रेडिकल कल्चरल फेमिनिज्म जो है वो जो लेस्बियन सेक्स है उसके फेवर में है। उसके अलावा ये जो रिप्रोडक्शन है उसके भी फेवर में है, लेकिन ये आर्टिफिशियल वेज में। ठीक है, एक्सपेंडिंग द रिप्रोडक्टिव रोल उसके जरिए ये कहते हैं कि होनी चाहिए रादर देन द नेचुरल वे, क्योंकि इनका ये ख्याल था कि रिप्रोडक्शन का ये बाइकआउट ना करें क्योंकि रिप्रोडक्टिव रोल उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ है। अगर आप इसका बाइकआउट कर भी देंगे तो फीमेल की एम्पावरमेंट नहीं हो पाएगी, तो इट्स बेटर दैट वुमेन दे नीड टू स्टिक टू देयर बायोलॉजिकल रोल्स, लेकिन ये पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट थे। ठीक है, और ओवरऑल जो है ये जो लेस्बियन है होमोसेक्सुअलिटीज को ये सपोर्ट कर रहे थे। So that was the difference between radical libertarian feminism and radical cultural feminism. Is it okay to everyone? Okay, thank you very much, Yusra. क्रिटिसिज्म अब कर लेंगे, एक थ्योरी का दूसरी थ्योरी के अगेंस्ट है वो इतना इशू नहीं होगा। ठीक है, पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो दैट इज द दुपट्टा जलाओ मूवमेंट, दैट इज रेडिकल फेमिनिज्म। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेरा जिसम मेरी ये जो औरत मार्च है, ठीक है, तो अगेन दैट इज एग्जांपल ऑफ द रेडिकल फेमिनिज्म इन पाकिस्तान। अगर किसी फीमेल का जिक्र करें कि पाकिस्तान में कौन रेडिकल फेमिनिस्ट है तो कौन होगी? मेहरबानो। उसके अलावा ठीक है, वो एक और भी है, क्या नाम है फीमेल का जिसका वो रमदे खलील बड़ा गेंस है उसका? ये जो खलील रमदे है ना वो फीमेल के बड़ा गेंस है, क्या नाम है उसका? हाँ, मारवी सरमद, वो भी रेडिकल फेमिनिस्ट है। ठीक, चले। अच्छा, वैसे एक और भी चीज है, अगर आपको ये चीजें मुश्किल लग रही हैं तो हम करंट अफेयर के टॉपिक पहले कर सकते हैं इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल। अगर तो सीक्वेंस में चलना है तो देन इट्स फाइन, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट और आपका जो comfort level है that is more important to me, so how you feel convenient accordingly I'm going to devise my strategy. So you wanna go with the flow or you wanna take start from the current affair topics? अच्छा, नबील करंट अफेयर, आयशा सीक्वेंस, और कोई? अच्छा, अभी भी दो दो वोट बराबर हैं अभी। अलिशबा ने भी सीक्वेंस कहा है, हीरा ने करंट अफेयर का कहा है। ठीक है, चलें, we stick to the decision of the majority, so we are going to follow the sequence of chapters. ओके, अब आ जाते हैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। जब हम मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बात करते हैं तो ये जो मार्क्सिज्म है इसका जो आइडियोलॉजी है, जरा अगर आपको वो समझ आ जाए तो आपको ओवरऑल समझ आ जाएगी कि व्हाट इज मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। जो कार्ल मार्क्स था, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को इन्होंने अप्लाई किया था अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, जिसकी वजह से इसको मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहा गया। ठीक है, अब ओरिजिनल जो थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की वो थी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लासेस की।
कि कार्ल मार्क्स ये कहता है, कार्ल मार्क्स बेसिकली आपको पता है ना कि वॉज ए कम्युनिस्ट, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स है वॉज ए कम्युनिस्ट। और कार्ल मार्क्स जो था वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट था। अब कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म के अगेंस्ट क्यों था? कार्ल मार्क्स ये समझता था कि जो कैपिटलिज्म है, दिस सिस्टम इज नॉट फेयर, because there is a division of classes. Certain classes they have access to resources, and certain classes they don't have access to resources. Since certain classes they have access to resources, so that's why they are going to exploit the interest of the weaker. So there is a conflict of interest. And in that conflict of interest, basically one is going to exploit that. Finally, that conflict of interest results in the exploitation. And there is always exploitation of the weaker. And who's going to exploit? Upper class is going to exploit. And what sort of exploitation is there? So there is a economic exploitation. The laborer, they're not going to given the due reward for their services, because the due reward that is going to be retained by the upper class. So that's why there is economic exploitation. And why lower class is going to get exploited? Because they do not have consciousness. They have no awareness that they are going to be deprived of their interest. So finally, the conflict of the upper class within the intra conflict, that is going to promote that is going to promote awareness within the lower class, and then they are going for revolt, and ultimately there would be a class-less society where the resources they would be equally divided to all individuals. No one would be superior, no one would be inferior. So that was a utopian concept. So that was an imaginative concept. So this was the real theory of the Karl Marx. Got it? सर क्या लेस्बियन लॉज यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज में भी बन नहीं? असफ मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी असफ, वुड यू लाइक टू अनम्यूट योरसेल्फ? Asaf, I didn't understand your question. ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था, हम किस पे बात कर रहे थे? ओरिजिनली मैंने आपको बताया ना कि क्या ये थ्योरी क्या थी कार्ल मार्क्स की ओरिजिनली। अब वो जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, उस थ्योरी को, उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने कॉपी किया। इन्होंने कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लासेस नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेक्स है। ठीक है, कि जिस तरह कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि सोसाइटी में दो क्लासेस हैं, एक है प्रोलेटरिएट और दूसरी है बोर्जवाजी। बोर्जवाजी जो थी वो अपर क्लास है, प्रोलेटरिएट जो थी वो लोअर क्लास थी। इन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लासेस नहीं है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेक्स है। उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेक्स में एक जो सेक्स है उसके पास रिसोर्सेज हैं और एक सेक्स के पास रिसोर्सेज नहीं है। जिस सेक्स के पास रिसोर्सेज हैं वो मेल है, जिस सेक्स के पास रिसोर्सेज नहीं है वो फीमेल है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेक्स है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेक्स का रिजल्ट एक्सप्लॉयटेशन में है, और एक्सप्लॉयटेशन वीकर की है। क्योंकि वुमेन के पास रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए उनका रोल सोसाइटी में एज अ लेबरर का है। तो वेमेन अपनी सर्विसेज देती हैं, उस सर्विसेज के अगेंस्ट उनका जो ड्यू रिवॉर्ड है वो उनको नहीं मिलता। अब फॉर एग्जाम्पल, एक आप कहते हैं कि 5 पाउंड का आपने रॉ मटेरियल लिया, 5 पाउंड से आपने 50 पाउंड का प्रोडक्ट बेचा, तो ये जो 5 पाउंड से 50 पाउंड हुआ, उस पे काम हुआ ना, लेबरर ने अपनी लेबर को एक्सर्ट किया, और वो लेबरर कौन है? वो फीमेल है। तो लेकिन 5 पाउंड से 50 पाउंड, वो जो 45 पाउंड का गैप है, जो इंक्रीज है, वो लेबरर का राइट है, जिसने इस पे काम किया, अपनी सर्विसेज को एक्सर्ट किया। लेकिन उसका जो ड्यू रिवार्ड है वो कौन ले जाता है? वो इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाता है, जो कि मेल है। ओके, तो उनका ये ख्याल था कि ये जो सिस्टम है इसमें फीमेल का जो, अगर मेल की जो मटेरियल प्रोग्रेस है उसमें फीमेल का रोल है एज अ लेबरर का। अगर फीमेल अपना रोल परफॉर्म ना करे एज अ लेबरर तो मेल तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन अगर फीमेल का रोल है तो उस फीमेल को उसकी सर्विसेज का एक्नॉलेजमेंट नहीं है, क्योंकि उसको उसका ड्यू रिवॉर्ड नहीं मिलता, और उसको जो है वो अपनी लेबर को सेल करती है। जो लेबरर है वो अपनी लेबर को सेल करता है। और ओवरऑल जो
इंटरेस्ट है या जो सारा आपका वो कह लेंगे जो रियल बेनिफिट है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है, वो मेल के पास है। सो दैट वाज द रियल थियरी ऑफ मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। ये क्लियर है दोनों सबको? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो इनका फोकस क्या था कि जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, सोशल फेमिनिस्ट एम टू इंक्रीज द वर्ल्ड इन व्हिच वुमेन एक्सपीरियंस देमसेल्फ एज अ होल पर्संस ग्रैंड रादर फ्रैगमेंट बीइंग ब्ला ब्ला ब्ला, ये मैंने बता दिया हुआ है। ओके, तो इस थ्योरी के सपोर्टर कौन कौन थे? एक तो इस थ्योरी का जो सपोर्टर्स था वो फ्रेडरिक एंगल्स है, ठीक है, कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। और फिर वो सारा इसमें बताता है मॉडर्न एंगल के किस तरह से जो फीमेल है वो एक्सप्लॉइट होती है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में, ठीक है। फिर इसमें जो जर्मन स्कॉलर है मारिया माइस, ठीक है, वो उसको बताती है कि फीमेल को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है सिस्टम में, और ये पेट्रियार्की है। अब आ जाते हैं हम इनके टेनेट्स ऑफ मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। मार्क्सिस्ट, अच्छा, मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिज्म किसी हद तक सेम भी है, लेकिन थोड़ा सा इनमें फर्क भी है, तो वो मैं एंड में बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। ओके, तो जो पहला इनका टेनेट्स है या प्रिंसिपल है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का, वो कहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, कि सिस्टम इज द प्रॉब्लम। लिबरल फेमिनिज्म ने कहा था कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो आपके एजुकेशन में है, लेजिस्लेशन में है। रेडिकल ने कहा था कि सिस्टम कहाँ पे है, वो पेट्रियार्की में है। इन्होंने कहा था कि जो प्रॉब्लम है वो आपके इकोनॉमिक सिस्टम में है। तो हर जो थ्योरी थी वो अलग-अलग रूट कॉज बताती थी कि वेयर इज द प्रॉब्लम। ये कहते थे कि women are not oppressed by men or by sexism but by capitalism। जिस तरह लिबरल ने कहा था ना, रेडिकल ने कहा था कि फीमेल्स रिजल्ट होती हैं बाय द एक्शन ऑफ मेन, और वो उनको फाइनली ऑप्रेस करते हैं क्योंकि उनको एज अ सेक्सुअल कमोडिटी के तौर पे लिया जाता है। लेकिन रेडिकल वालों ने कहा कि, इन मार्क्सिस्ट वालों ने ये कहा कि ये सेक्सिज्म इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है वो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा, वेमेन को एम्पावर नहीं किया जा सकता। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम क्यों एक्सप्लॉइट करता है? क्योंकि इसमें एक्सप्लॉइटेटिव पावर रिलेशन है। एक्सप्लॉइटेटिव क्यों है? क्योंकि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेक्स है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेक्स है वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। और वो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें या तो वो कहता है कि आप बी एम्प्लॉयड हो जाओ लो वर्क वेजेस पे, या नो वर्क एट ऑल। तो फीमेल के पास ऑप्शन है कि या तो उसको कम पे किया जाएगा या उसको वर्क नहीं दिया जाएगा। तो इन दोनों सूरतों में फीमेल की समझती है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वो बी एम्प्लॉयड वाली ऑप्शन को एक्सरसाइज करती है। तो ये एक्सप्लॉइटेटिव पावर रिलेशंस हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेक्स है, ठीक है। ओके, फिर वो ये कहते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जब तक ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा तब तक फीमेल की एम्पावरमेंट नहीं होगी। और वो कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज क्यों होना जरूरी है, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द एलिनेटेड नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय एलिनेटेड नेचर? आइसोलेटेड, शाबाश अलिशबा, यस, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। तो एलिनेशन का मतलब होता है बेसिकली बेजारी, कि अगर अलिशबा जो है, अगर अलिशबा फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बनाती है, क्या बनाएंगे अलिशबा आप? चले हम कहते हैं कि अलिशबा हैंड बैग बनाती है। तो अगर अलिशबा हैंड बैग बनाती है तो क्या अलिशबा एट द एंड ऑफ द डे उस हैंड बैग को क्लेम कर सकती है कि ये मेरा है? नहीं, क्योंकि अलिशबा तो वर्कर है। तो अलिशबा जो है, अलिशबा एक हैंडबैग बनाती है, उसको वो देखती है, अच्छा ये किस तरह से प्यारा होगा, उसको किस तरह से मैंने स्टिच करना है, उसको किस तरह से मैंने प्रेजेंट करना है, वो उस प्रोडक्ट पे इसकी इन्वॉल्वमेंट है अलिशबा की। बट एट द एंड ऑफ द डे इसको ये एहसास होता है कि ये चीज मेरी नहीं है, ये जिसको मैंने इतनी मेहनत से बनाया है ये मेरी नहीं है। और ना तो वो अपनी मर्जी से उसको मार्केट में सेल कर सकती है, ना ही उसकी प्राइस सेट कर सकती है। तो ये उसके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से वो सिस्टम से एलिनेट हो जाती है। और गेटिंग माय पॉइंट? तो बेजारी। और दूसरा ये कि वो कहता है कि ये जो सिस्टम है उसमें चलिए वो नेक्स्ट कर लेते हैं, कि इसमें क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर है, कि अगर अलिशबा काम करना चाहती है तो अलिशबा के पास रिसोर्सेज नहीं है। तो अलिशबा जब पब्लिक रोल में जाएगी तो अलिशबा हैज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू वर्क एज अ लेबरर।
ठीक है, बिकॉज शी इज नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट, शी डजंट हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड शी इज नॉट गोइंग टू कंट्रोल मीन्स ऑफ ओनरशिप। तो उसके पास जो एक ऑप्शन आ जाती है वो एज अ लेबरर की आ जाती है, और उसकी बेसिस पे उसको वो कहता है कि ये जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, वो मेल को एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट और वुमेन को एज अ लेबरर, एज अ प्रोलेटरिएट दिखा रहा होता है। नेक्स्ट, फिर वो ये कहता है कि ये जो सिस्टम है आपका, वो है नेगेटेड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रिलेशंस। व्हाट यू मीन नेगेटेड सिस्टम ऑफ कमोडिटी फेटिशिज्म का पढ़ा आपने कभी? सर व्हाट डज LOR? ये बेसिकली जो डिवीजन ऑफ लेबर की मैंने आपको वो एग्जांपल्स दे दी है ना, कि उस डिवीजन ऑफ लेबर में जो आपके लेबर राइट्स हैं या आपकी जो लेबर अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी वो इंटायरली डिफरेंट होंगी। तो वो उसकी एग्जांपल्स थी, वो मैंने अपने लिए किया हुआ था। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट है कमोडिटी फेटिशिज्म। कमोडिटी क्या है? कमोडिटी जो है ये कहते हैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू अर्न प्रॉफिट, कि हर वो चीज जो कि प्रॉफिट देती है उसको कमोडिटी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब कमोड जब हम वर्स इसकी बात करते हैं फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी के हवाले से, कि बेसिकली ये होता है कि व्हाट यू गेट इन एक्सचेंज फॉर योर लेबर वर्सेस व्हाट यू प्रोड्यूस, कि आपने जो एक प्रोडक्ट किया, बनाया, ठीक है, उसकी प्राइस क्या है, और इन रिटर्न में आपको जो मिला वो जो डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब उनका ये था कि क्योंकि ये जो सिस्टम है उसमें, जिस तरह अभी हम कह रहे थे बात, कि ये जो हम अलिशबा की बात कर रहे थे, कि अलिशबा अगर एक हैंडबैग बनाती है तो एट द एंड ऑफ द डे वो अलिशबा के कंट्रोल में नहीं है कि ये किस मार्केट में जाएगा, ये किस प्राइस में जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो उसका ड्यू रिवॉर्ड बनता है, कि जो कमोडिटी की प्राइस थी, टी के प्राइस के अकॉर्डिंगली उसको पे किया जाता ना। तो अलिशबा तो उस कमोडिटी की प्राइस के अगेंस्ट पे नहीं किया जा रहा, वो जितने का भी बिके, अलिशबा को तो एक फिक्स आवर्स जो है उसके लिए उसकी जो लेबर है वो अपनी लेबर को सेल कर रही है। तो उनका ये ख्याल था कि ये जो कैपिटलिज्म है ये क्यों वुमेन को एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि इसमें जो है उसका ड्यू रिवॉर्ड नहीं है। और ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह अगर आप बात करें किसकी, जिस तरह आप बात करते हैं प्रोस्टिट्यूशन की, या जिस तरह आप बात करते हैं सरोगेसी की। हैव यू हर्ड द टर्म सरोगेसी? हैव यू हर्ड द टर्म सरोगेसी? यस। So, Yusra, can you tell me about the surrogacy? What is surrogacy, Yusra? हाँ, शाबाश शलाल, बिल्कुल ठीक है। Assalamualaikum, sir. जी जी, वालेकुम सलाम। Sir, basically, surrogate is someone like a substitute or a replacement for someone or something in specific. Shabash, do you have any example of a person where the surrogacy was performed, or any child Sir, that was for adopted? example, Nick Jonas had his kid like with surrogacy. ठीक है, शाबाश, एक्सलेंट, ठीक है। वो आप उसकी एग्जांपल दे दें, ये इवन शाहरुख की भी दे दें, बट ओवरऑल यू नो द कॉन्सेप्ट वेरी वेल, आई अप्रिशिएट। अब सरोगेसी में क्या होता है कि होता है ना कि समटाइम फीमेल बड़ी कैरियर ओरिएंटेड होती हैं, या फीमेल जो हैं दे आर मोर सेंसिटिव फॉर देयर बॉडी, कि उनकी बॉडी जो है वो डी शेप ना हो, अ, या उनको सर्टन स्टेज पे कैरियर बनाना होता है, तो उनके लिए बड़ा डिसीजन मुश्किल होता है कि अभी वो फैमिली बनाए या कैरियर बनाए। तो एट द सेम टाइम, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप मेड घर में रखते हैं, कि एक मेड है वो आपकी घर की क्लीनिंग कर जाता है, आपकी कुकिंग कर जाता है, आपको ड्राइवर रख लेते हैं वो मार्केट ले जाता है, तो यू आर गोइंग टू हायर द सर्विसेज ऑफ अदर पर्सन। So similarly, for reproductive roles, you are going to hire the services of another female, कि उसी कपल का जो एग और उसका जो स्पर्म है और उसके एग्स हैं वो बेसिकली इंजेक्ट कर दी जाते हैं एक और फीमेल में, तो वो उसमें उसका फ्यूजन होता है, और फिर वो आगे से उसके बच्चे की टेक केयर करती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर 9 मंथ शी इज गोइंग टू डिलीवर देयर चाइल्ड, क्योंकि वो एग और स्पर्म तो वो
ओरिजिनल होता है ना, यानी कि उसके जो बच्चे के असल माँ बाप होते हैं। तो बेसिकली ये आप समझ लें कि ये जो मदर है, इसकी बस सर्विसेज हायर की जाती हैं। ठीक है, और गेटिंग माय पॉइंट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, थैंक यू वेरी मच। उनका ये ख्याल है कि आप जिस तरह फीमेल 9 महीने बच्चे का ख्याल रखती है, यू आर गोइंग टू पे whether that amount is satisfactory. The answer is no. आप उसको 9 मंथ्स के हिसाब से पे कर रहे हो ना, लेकिन 9 मंथ्स में उसकी जो बच्चे के साथ अटैचमेंट है, वो जिस तरह बच्चे की मूवमेंट को वो फीमेल फील करती है, और जिस तरह उसकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसकी बॉडी में, उसके लिए तो आप उसको पे नहीं कर रहे होते। आप तो ओवरऑल बस 9 मंथ्स का जेन में रख के पे कर रहे होते हैं ना, कि 9 मंथ्स तक आपको काम नहीं करोगे या बच्चे का ख्याल रखोगे। लेकिन बाकी चीजों का जो साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, उनका पे नहीं कर रहे होते। आर गेटिंग माय पॉइंट? सेम इज द केस विद द प्रोस्टिट्यूशन। कि जो प्रोस्टिट्यूशन है, अगेन आप उसमें फीमेल को पे कर रहे होते हो फॉर सर्टन आवर्स, ठीक है, या फॉर सर्टन डेज वट एवर। लेकिन वो फीमेल साइकोलॉजिकली, सेक्सुअली, वो किस तरह से वो जो एक्सपीरियंस है उसका, उसको वो बेयर करती है, उसके लिए आप उसको पे नहीं कर रहे होते। तो वो कह रहे हैं कि सेम इज द केस विद द कैपिटलिज्म। कि कैपिटलिज्म में जो फीमेल है, फीमेल को पे किया जाता है फॉर हर सर्विसेज, कि वो 6 घंटे काम करे या 8 घंटे काम करे। लेकिन वो जो फीमेल है, उसकी जो अटैचमेंट है विद द प्रोडक्ट, और उसका जो कंट्रोल है, वो उसमें उस तरह से वो नहीं हो पाता, और अगेन उसका जो ड्यू रिवॉर्ड है वो भी उसको नहीं मिलता। तो वो कहते हैं कि ये सिस्टम बेस करता है एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशंस पे। ठीक है, और इसमें दैट इज अ सिस्टम ऑफ नेगेटेड फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी। ओके, तो फिर ये क्या कहते हैं, कि ये कहते हैं कि दे शुड बी कॉन्शियस रेजिंग। अब देखिए, कॉन्शियस रेजिंग की सारे बात करते हैं, लेकिन जो कॉन्शियस रेजिंग की डोमेन है वो इंटायरली डिफरेंट है। रेडिकल ने कहा था कि कॉन्शियस रेजिंग अबाउट द पेट्रियार्की, कॉन्शियस रेजिंग अबाउट द एक्ट ऑफ सेक्स। लेकिन इन्होंने जो कॉन्शियस रेजिंग की बात की, वो की अबाउट द कैपिटलिज्म, कि ये जो कैपिटलिज्म है वो किस तरह से आपको एक्सप्लॉइट करता है। और अगेन कि आपको ये पेट्रियार्की अल्टीमेटली, कि जो आपको वर्क्स को अनरिवॉर्डेड रखती है, लाइक ए डोमेस्टिक वर्कर एज वेल। कि फीमेल जो है उसको नहीं मिलते, तो घर में तो उसकी सर्विसेज बिल्कुल ही एक्नॉलेज नहीं होती। तो वो ये समझती है कि चलें कुछ तो मिल जाएगा ना इंडस्ट्री में काम करके, तो होती वो इंडस्ट्री में भी एक्सप्लॉइट है। गॉट इट? इन्होंने ये कहा कि जो वुमेन की एम्पावरमेंट है वो पॉसिबल है व्हेन दे वुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सर्विसेज। और वो सर्विसेज जो भी होंगी, वट एवर द फील्ड इज, women they need to launch a complaint for their rights, and then wages is a person who was going to lead the movement. Okay, sorry, Weeks is a person, she's a female who was going to lead movement for their household campaigns as well. So she basically run a campaign, wages for the housework, that no work would be left unrewarded. So whatever the services, whatever the role that's going to be performed by women in any field, they need to be rewarded fairly. Okay, so then struggle against the oppressive working hours. Since they were of the view that females, they need to be given a reward for all their services, irrespective of their field, even the domestic worker that need to be rewarded as well. And they were of the view that these are the oppressive working hours in the family as well as in the industry. So all the oppressive working hours, they need to be ended, and women, they need to be given very due treatment in society. And here, for example, if you're talking of the capitalism and you're going to talk of the conflict of the sex, you're going to talk of the men as a industrialist, that they're going to have control and they have the means of ownership, and the women, they're going to work as a worker, as a laborer. So this is not a result of the biological factor, that if women, they're going to act as a worker and men, they're going to act as a supervisor, it doesn't mean that they biologically they are more powerful and something like this. So this is just the system. This is a system that is going to provide opportunities on the basis of sex. Okay, rationally, both have the same potentials, both have the same competence, both have the same calibers, but this is a society that is going to provide opportunities on the basis of their biological differences as well. So then they were talking of the liberation of all women.
that Marxist feminists of the view that you have to liberate women, and then liberation is possible when you're going to take women out of this capitalistic structure of the society, because capitalistic structures are more harmful of the society, and unless women they're going to be rewarded economically. You know very well that Karl Marx was of the view that 99% of the problem they could be linked directly and indirectly with the economic factors. So same was the case here. They were of the view that when you're talking of the elimination of the patriarchy, you're going to talk of some sort of reform within the legislative process, and you're going to talk of the right to vote to women as well. But the thing is, if economically they are dependent on a man, again they would be exploited by men. So the first thing that you can do favorably for the women, that you need to liberate women economically from men. Okay, so that was their point. So they were in the favor of the transfigurative politics. Transfigurative politics is to some extent different from the collective struggle, the concept of the sisterhood. You know very well the liberal families they were of the view that the women they need to show resistance individually. When you're talking the radical feminism, so they were going to talk of the showing aggression and the resistance in a more organized way as a group struggle and the concept of the sisterhood. When you're talking of the Marxist feminism, so they were not in the favor of the group struggle and the concept of the sisterhood. So they were of the view that it is quite possible that your issues they could be different from region to region, and if a certain in certain regions the women have their specific issues, not necessarily all women they have the same issues. So we have to give due care to the intersectionality, that the race factors, the class factors, and many other cultural factors as well, which are going to oppress the conditions of women. So considering your specific issues, you have to design your strategies by yourself. Then you have to raise your issues in a political forums, and accordingly, you need to make some sort of struggle for your empowerment. So that is the concept of the truth of politics. Got it? Is it clear so far? Thank you very much, Yusra. Then women collective self-determination. That women collective determination means that this system is a problem. I'm not talking of the strategy in terms of the collective approach. I'm term of their collective wisdom in identification of problem. Okay, so there should be the collective self-determination that this economic system is the problematic. The problem lies within the system because this system is built on the basis of inequality. So by default, that is going to exploit women. Okay, and next then there's a utopian artifacts, that yes, this if the system is a problematic, then you have to get yourself disassociated from the system, and you need to make awareness, you have to educate other women that they have to talk of their due reward for their services, and you need to have a hope that in future you will be treated equal in society. So this same concept could be linked with the original theory of the Karl Marx, where he was going to pursue that then there would be revolt, and then the lower class is going to replace, that is going to show revolt against the upper class, and then the class less system would be built, that is a more utopian. So similarly here the Marxist families they were of the view that right now you need to show resistance and you should not accept the low wages, and at the same time you need to have this feeling that if you go for resistance and you are not going to accept the harsh economic this economic system, so ultimately you would be dealt equally, and in future you will not be exploited for your economic services. So you need to have a hope for changing the system as well. Got it? So if you're talking of the various, thank you very much, Yusra, I appreciate. So when you're talking of the subsidies, for example, if a government is providing certain subsidy, so that would be under Marxist feminism or not? For example, if the government says that if you female, they're going to get engaged in a certain reproductive roles and for certain other services as well. So in return, they would be paid economically. So that would be under falling under the domain of the Marxist feminism as well, and the wage work for women in home, that is domain of the Marxist feminism as well. Okay, so these are any, it means that any program, initiative, and any plan that includes for economic empowerment, that would be more associated with the Marxist feminism as well. Okay. Okay, how Marxist feminism is different from the socialist feminism? Basically, it is a very simple, but to some extent, it is also very dodgy. Okay, so when you're talking the Marxist feminism, so Marxist feminism is entirely focusing on just one
type of exploitation, that is the economic exploitation. When you're talking of the socialist feminism, so socialist feminism is a combination of the radical feminism as well as the Marxist feminism. Because socialist feminism is of the view that why women they're going to be exploited in a capitalistic structure, because ultimately the supervisory role is a more associated with the male, and male, that is a patriarchal thinking. So why women they're going to be paid less for their services in economic systems, because ultimately she's going to be controlled by a male member of society. So yes, you could not talk of elimination of your economic disparities without eliminating the patriarchal structure of society. So socialist feminism is a mixture of Marxist feminism as well as radical feminism. Is it clear to everyone? If you have any confusion, please feel free. Okay, thank you very much. Well then. Okay, so if you're talking the social feminism, so social feminism, the oppressive relations between the sexes and things like this, blah blah blah. This is very simple. You can do it. Basically, I have explained this. Don't worry. Okay, so if you are going to talk of the socialist feminism, that who was the supporter of the socialist feminism? So the Juliet Mitchell was a favor of the socialist feminism. Okay, and then the Iris Young, she was also in the favor of the socialist feminism. Okay, and so let's have a look. The liberation of women must be sought in conjunction with the social and economic justice. Look, radical when you're talking Marxist, that was more focusing on the economic justice. When you're talking of the social, so social is a combination of economic plus social. And economic by eliminating the capitalism. When you're talking of the social, it would be possible with the help of elimination of patriarchy. Got it? So socialist feminists, they encourage a women to liberate, it encourage the writers to liberate women from male supremacy as the key to social justice. Okay, so this is the same thing. That's all about it. And criticism, because it is focusing more on economic factor, no legislation, no heterosexuality, no other things they were going to get discussed. So that's why it is known as it was going to be criticized for certain actions. So the next theory is psychoanalytical feminism. Do you have any questions so far? Do you have any questions so far about liberal, radical, Marxist? No, thank you very much. Okay, so if you're talking of the psychoanalytical feminism, so it is more related with the psychological development. कि ये कहा जाता था कि जो फीमेल है वो साइकोलॉजिकली इंफीरियर है, ठीक है? तो ये जो आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसका बड़ा रोल है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ठीक है? साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म ये कहती है कि फीमेल को साइकोलॉजिकली एम्पावर करवाएं कि शी इज कॉम्पिटेंट इनफ, शी इज रैशनल इनफ, शी हैज टू प्ले a positive role in society. Only then she could contribute positively to the welfare of society. And if you are going to judge the personality of a female on the basis of certain negative things, and you're going to make female realize that she's only suitable for a certain role, then she's going to be exploited in society. So psychological feminism is the awareness, psychological, psychosexual empowerment of a woman, so they could have a more positive role in society. Okay, so psychoanalytical feminism is an approach that combines psychoanalytical theory and the feminist theory to analyze and understand the ways in which gender and power intersect. Okay, it explored the influence of unconscious desire, sexuality, and the societal norms on women experience and identities. Okay, for example, if you say why women they remain in home, why they feel comfortable in performing, why they feel comfortable performing their daily, their, you could say that their reproductive roles, and even they feel more comfortable performing their household activities. So again, it is going to be considered with the unconscious desire, sexuality, and the sexual norms. Okay, so basically these things they relate with the overall opportunities of society. Okay,
Okay, the main question that was going to be addressed by psychoanalytical feminism: why men subconsciously sustain patriarchy and why women subconsciously do not counteract this, like in our society. For example, uh, if a Yusra is just moving in a commercial market, and if any person, I'm just overall, I'm going to give an example, the reality could be different. So even if a person is going to pass a comment on Yusra, and normally Yusra will ignore unless that is a very harsh comment. Because subconsciously, you could say that Yusra would be believing that it's the better not to respond, because ultimately she has to take care of her own dignity. So it's a better not to raise this issue on public forum, because ultimately she's going to make target of fun in the eye of every individual. Okay, so this is something. On the other hand, if a female is going to pass a comment against Nabil, so Nabil would be of the view that he would never ignore, he would never tolerate, and he would be of the view that I have to answer and I have to settle the score immediately because I cannot leave the girl unattended. So this is the difference between the thinking of a male and a female. Okay, so this theory, psychological feminism, is going to answer this, that subconsciously men they have a patriarchal thinking, and women they subconsciously they they have some sort of more, you can say, inclinations for accepting the violence in society as well. So Sigmund Freud, basically, he was a he was a you can say that he was a main writer, and uh, he was the main, overall you could say that the scholar who was going to explain the psychoanalysis, which is a study of the unconscious mind. Okay, okay, what is unconscious mind, and how unconscious mind shapes the personality of individual. So there's psychoanalysis theory that was given by Sigmund Freud. Okay, and that theory, Sigmund Freud theory, that was given, that was going to promote the ideology of the patriarchy. That theory that was given by Sigmund Freud, that theory was negated, and that theory was criticized by the Juliet Mitchell and many other writers as well, even Shulamit Firestone, Kate Millett, as well, Germaine Greer as well. Okay, so what was the theory of the Sigmund Freud? Sigmund Freud tells what a woman is. Okay, and when you talk of the Sigmund Freud, so Sigmund Freud tells how she comes into a being, how a woman develops out of a child with a bisexual disposition. Sigmund Freud was of the view that a female is inferior. Why a female is inferior? Because a female has no power. What is a power? That is a penis. And nature has deprived a female of power. And this is not something by that was decided by individual. This is something that is decided by the nature. And Sigmund Freud was of the view that there is a various, you could say, psychosexual stages of development, and that psychosexual stages they could be observed in various phases as well. For example, when you're talking of the oral stage, then there's the anal stage, then the phallic stage, then there's the latency stage, and there's a more a genital stage. But here we are going to focus more on the phallic stage. Phallic stage that is going to get experienced by any child during the age of 3 to 6. In this stage, that is a phallic stage, you could say that basically in this stage, a child becomes more aware of her own sexual identity. Okay, and during this stage your relations they are going to be built on the basis of your sexual preferences. Okay, and at this stage, basically, a female realizes about her own genitalia, and she realizes unconsciously. Basically, we are going to talk of unconscious mind, that how unconscious mind shapes the personality of an individual. Okay, so Sigmund Freud is of the view that unconsciously, when a female baby, both the child, male baby as well as the female baby, but right now I'm going to focus on just one. Okay, about I'm going to talk of a female. So Sigmund Freud is of the view that during the age between 3 to 6 years, a female baby unconsciously realizes her genitalia. Can we control our thought? Huh? Can we control our?
थॉट्स। यार नबील, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी नबील, सीन यू आर कर रहे हैं ऑडिबल। लाइट भी आई है। सर एक्चुअली मैं ये बात कर रहा था कि जो हमारी थॉट्स हैं जो कि अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली हम सोच रहे होते हैं, क्या हम इनमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं कि हमारी थॉट्स 100% में से 30% या 40% थिंकिंग हमारी थिंकिंग ऐसी हो। एक्चुअली एक साइकोलॉजिस्ट हैं, लाहौर से आए थे मैं यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने सेशन लिया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि कुछ अपनी जो थिंकिंग है ना, अपनी जो थॉट्स है ना, उनको थोड़ा कंट्रोल करो। आपकी क्या थॉट्स हैं? सर मीन्स के मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन इस तरह से किया था। मुझे मैं उसका थोड़ा सा बताता हूँ कि मैंने उनको बोला था कि डिसीजन मेकिंग के बारे में बता दें थोड़ा सा, कि मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो सके। तो उन्होंने बोला था कि आप कितने परसेंट जो आपको थॉट्स आती है वो अपनी मर्जी से सोचते हैं, तो क्या आप डिसीजन कितने परसेंट लेते हैं डेली, जो आपको थॉट्स आती हैं, कोई भी जो एक्शन लेते हैं उनमें से कितने डिसीजन है वो आप खुद कॉन्शियसली लेते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला था कि बहुत रेयर है। उन्होंने बोला कि नॉर्मली एवरेज इंसान मैक्सिमम जो है वो 25% या 30% डिसीजन अपनी मर्जी से ले रहा होता ठीक है, पर मेरे से है। क्या शायद पूछना मैं चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या जो हमारी थॉट्स हैं ये हमारे कंट्रोल में हो सकती हैं मैक्सिमम। चलिए नबील साहब, ये तो खैर आपको उन्होंने आंसर उसका दे ही दिया था। देखें, ये डिपेंड करता है सम टाइम इंडिविजुअल्स पे। और अगेन, जब आप इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, डिपेंड्स करता है ऑन द फैमिली। अगर ये वो चीजें हैं जो कि एकदम नहीं आ सकती। इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। अब देखो ना कि हम कहते हैं, माइंड ना कीजिएगा अगर आप में कोई शेख हो, हम कहते हैं कि शेखों के बच्चे बड़े सियाने होते हैं। ठीक है। रीजन क्या है कि आप शुरू से ही उनको बिजनेस ओरिएंटेड माइंड की तरफ कर देते हो कि यार आपने ये बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है। आप रिस्क टेकिंग एटीट्यूड आपका आ जाता है। अब जब आपको शुरू से ही पैम्पर्ड रखा जाता है, हर काम करना है, आपको कहा जाता है कि आपने ये जो कहा गया है वो करना है। एट द सेम टाइम जब आप बड़े होते हैं तो आपको लगता है कि यार हर चीज मुझे पूछ के करनी चाहिए, मुझे उस तरह, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, मैं आपको जस्ट एक ओवरऑल वो बता रहा हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस कि आपकी फैमिली में आपको किस तरह से एनकरेज किया जाता है, आपकी सराउंडिंग में आपको किस तरह से एनकरेज किया जाता है। सम टाइम होता है कि आप एक डिसीजन गलत भी कर लेते हैं, लेकिन आपकी आपके जो लोग हैं वो आपको एनकरेज करते हैं। तो अगेन आपको मोटिवेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दूं। जिस तरह हमारी सोसाइटी में होता है, हमारी सोसाइटी में ये होता है कि आपने कोई भी रिसर्च करनी है ना, तो आप टीचर से पूछते हैं मैं क्या करूं। अब मैंने जब मास्टर्स का डिसर्टेशन करना था, तो मेरी जो सुपरवाइजर थी डॉक्टर जैन, मैंने उसको कहा कि मैं टॉपिक क्या रखूं। कहती है ये तो मैं नहीं बता सकती टॉपिक क्या रखें, ये तो आप खुद करें। मैंने कहा मुझे हिंट दो। कहती मैं तो आपको हिंट नहीं दूंगी। मैंने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा, आपका तो इतना नॉलेज है। उसने कहा कि नो, यू हैव टू स्पेंड टाइम इन सर्टेन लिटरेचर रिव्यू एंड देन यू कैन कम अप विद सर्टेन आइडियाज, यू कैन हैव डिस्कशन विद मी, बट आई एम नॉट द पर्सन टू गाइड यू दैट यू नीड टू डू रिसर्च इन दिस फील्ड। जिस तरह हमारा ये क्या होता है, हम तो प्रोफेशन तक चूज कर देते हैं कि पुत्र तो ऐप बनना है। ठीक है। या हम कहते हैं कि लड़की हो तो उसने ऐप बनना है। तो वो इवन छोटी सी, और मेरे लिए वो बड़ा था। मैंने कहा यार इसने मुझे कहाँ फंसा दी है, मुझे ये बता देती तो बात खत्म हो जाती। अब इसने सारा मेरे पे डाल दिया। अब नॉर्मली ये था कि जब मैंने वो उस पे किया, मैं उसको जो बात करता था वो उसको नेगेट नहीं करती थी। वो कहती थी कि ये ठीक है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा इस एंगल, उसको वेरियस एंगल्स को एक्सप्लोर करें। ऑल द टाइम शी गेव अ हिंट। और अल्टीमेटली वो मैं ही था जिसने उस रिसर्च को लीड किया, एंड शी सुपरवाइज मी। तो देखो ना, ये तो सर एक्चुअली इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर। जी सर, एक बात है कि जब मैं स्टडी कर रहा होता ना, तो क्या ये कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो जब मैं स्टडी कर रहा हूँ
तो मुकम्मल मेरा फोकस स्टडी पे ही हो और बाकी चीजें जो है ना वो मेरे माइंड में ना आए, जिस पे मैंने कुछ टाइम फ्री टाइम स्पेंड किया होता है या सम टाइम कभी दोस्तों के साथ बाहर गया हूँ, तो उस तरह वो चीजें जब माइंड स्टडी कर रहा हूँ तो फिर स्टडी पे ही मुकम्मल फोकस रहे, आप स्टडी तो करने से दूसरी पहले कोई थॉट्स बिस्मिल्लाह, वगैरह ना हो। आप स्टडी करने से पहले कोई बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, कोई दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, तो मेरा ख्याल है कि उसमें ओके। अफाका होगा आपको। कोई ओके नमाज सर, पढ़ थैंक लिया यू। करें। हाँ जी। चलें। ओके। आ, खैर वो मेरा ख्याल है कि ये आपकी अपनी डेडिकेशन पे भी सम टाइम चीजें मैटर करती हैं, आपकी अपनी विल पे भी, आपके चैलेंज के, आपके गोल पे भी डिपेंड करता है। देखिए हमेशा आपको वही थॉट आते हैं ना जिस जो कि आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो अगर आपकी प्रेफरेंसेस वो मैच था, या आपकी प्रेफरेंसेस कोई कोई अगर आप कहते हैं कि कोई वो कोई फॉर एग्जांपल सॉन्ग है या कोई प्रेफरेंस और है, तो फिर बुक्स में भी तो वही चीजें याद आएंगी। इसलिए बेहतर है कि जो आपका एक गोल होता है, जब उसमें आप डेडिकेशन शो करते हैं, परसेवरेंस शो करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू टेक इंटरेस्ट एंड यू ड्राइव प्लेयर वाइल स्पेंडिंग सम टाइम। ठीक है। अब देखो ना, अक्सर क्लास में, मेरी क्लास में जो फिजिकल लेक्चर्स भी होते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं क्लास में। आई एम प्रीटी श्योर अभी तो ऑनलाइन क्लास आधी सोई होती है, तो लेकिन इवन फिजिकल क्लास में भी वो समटाइम बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि वो प्रायोरिटी और होती है ना। तो फिजिकली तो आप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटली तो आप कहीं और एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। खैर अभी मेरे ख्याल हम डिस्कशन से हट गए हैं थोड़ा सा नहीं, काफी हट गए हैं। इंटायरली दैट वाज इररेलेवेंट डिस्कशन। हम वैसे पढ़ क्या रहे थे? सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, ये मैंने कर दी, ये स्लाइड एक्सप्लेन हो गई है ना? हाँ फॉलेक्स, ये फॉलेक्स स्टेज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना? यस ओके। ओके। अब सिगमंड फ्राइड ये कहता है कि बेसिकली कौन सी थ्री एजेंसीज हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को बनाती हैं। ठीक है, वो है इड, सुपर ईगो और ईगो। इड क्या है? वो आपकी नेचुरल डिजायर्स है। सुपर ईगो क्या है? जो कि आइडियल है। ठीक है। ईगो क्या है? कि जो दोनों को मैच करती है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि यार मैंने, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि युसरा जो है, अब युसरा कहती है कि आई हैव टू कीप माई सेल्फ वेरी स्लिम एंड स्मार्ट। ठीक है। अब युसरा की नेचुरल डिजायर है कि युसरा ने खाना भी खाना है। ठीक है, ये उसकी नेचुरल डिजायर है कि इसका दिल करता है मैं चॉकलेट्स खाऊं, मैं आइसक्रीम खाऊं। ठीक है, हर वक्त मैं कुछ ना कुछ खाती रहूं। ये इसकी नेचुरल डिजायर है। सोचती ये है कि यार मुझे जो है ना फिट रखना है अपने आप को, जो है ना वो बिल्कुल अपना वेट बैलेंस उसको मेंटेन रखना है। तो अब ये इसकी आइडियल है कि मैं 24 घंटे एक्सरसाइज करूं। नेचुरल इसको भूख भी लगती है। ठीक है, तो अब बैलेंस ये किस तरह से करेगी? कि ये कहेगी कि अच्छा, एक तो ये कि मैं जो पोर्शन है अपना ईटिंग पोर्शन उसको रिड्यूस कर दूं। प्लस ये है कि आइडियली तो मुझे चलो दिन में 3 घंटे फॉर एग्जाम्पल वर्कआउट करना चाहिए, तो और कुछ नहीं, मैं 30 मिनट्स तो जरूर वर्कआउट करूँ ना। गॉट इट? तो ये आ जाएगा आपका ईगो, जो कि आपकी इड को और आपकी सुपर ईगो को मैच करती है। तो इस तरह आपके रिलेशंस चलते हैं। ओके। अब इसमें क्या है कि सिगमंड फ्रॉइड ये कहता है कि जो फीमेल है, फीमेल में जो रिलेशंस बनते हैं वो आपकी जो मूवमेंट है रिलेशंस में, वो ऑन द बेसिस ऑफ इड है, नेचुरल डिजायर। और वो क्या है? दैट इज योर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस। अब फीमेल जो है, फीमेल के डिजायर है कि वो सेक्सुअलिटी को एक्सपीरियंस करे। ठीक है। और जो एक नेचुरली, अगर हम सुपर ईगो की बात करें, तो सुपर ईगो में वो ये आ जाता है, वो कहता है कि फीमेल की जो सुपर ईगो है, फीमेल की सुपर ईगो वीक है। यानी कि आइडली क्या होना चाहिए था कि उसके जो रिलेशंस हैं वो ब्लड रिलेशंस में नहीं आने चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, कि जो फीमेल बेबी है उसकी जो रिलेशनशिप है, उसकी जो अटैचमेंट है, जब हम उसकी बात करते हैं ना इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की, तो वो कहता है कि फीमेल बेबी की अटैचमेंट उसके फादर के साथ है, क्योंकि वो ये समझती है कि आई एम पावरलेस, और जो पावर है वो मेरे फादर के साथ है। और आइडली क्या होना चाहिए था कि फीमेल की अटैचमेंट उसकी मदर के साथ होनी चाहिए था, लेकिन वो उसकी सुपर ईगो वीक है, क्योंकि जो इड है वो उसमें ज्यादा है। ठीक है। और वो कहता है कि फिर वो अल्टीमेटली, क्योंकि कि वो रिलेशन नोबल है, जिसकी वजह से शी इज अनएबल टू गेट, शी इज अनएबल टू एक्सपीरियंस हेटेरोसेक्सुअलिटी, बट फाइनली व्हेन शी इज गोइंग टू गेट मैरिड, देन शी इज गोइंग टू ओवरकम हर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो उसमें पीनस एनवी की वो बात करता है, और वो कहता है कि फीमेल में ये जो उसकी जो अनकॉन्शियस माइंड है,
कि वो कहता है कि इवन उसको भी नहीं पता कि हाउ शी इज गोइंग टू build her relations. But this is something, and even she's not mature enough to think over this sexual relationship. But this is something that is quite natural, and that psychosexual development that is going to shape your personality. कि female को realize होता है कि I am inferior or I am deprived by power, and she's going to idolize the fathers as well. Okay. और इसी तरह उसने फिर मेल की भी बात की कि मेल में पैट्रियार्कल थिंकिंग किस तरह से डेवलप हो जाती है कि जो मेल है, जब हम ऑडिपस की बात करते हैं, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की, कि जो मेल बेबी है उसकी अटैचमेंट उसके मदर के साथ है, और अगेंस्ट उसकी जो, क्योंकि आपकी जो अपोजिट सेक्स के साथ अटैचमेंट है वो बिकॉज ऑफ योर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस। सिगमंड फ्रॉयड के नजदीक जो हिट्रोसेक्सुअलिटी है, हिट्रोसेक्सुअलिटी क्या है, वो बेसिकली दैट इज क्वाइट नेचुरल, कि वो आपकी पर्सनालिटी को कंप्लीट करती है। लेकिन वो कहता है कि जो मेल है, मेल बेबी, वो अपनी मदर की तरफ एफिलिएशन इसलिए नहीं बढ़ाता क्योंकि वो समझता है अनकॉन्शियसली कि आई एम गोइंग टू compete माई फादर, एंड इफ आई एम गोइंग टू compete माई फादर देन आई वुड बी then I have to experience castrations, the removal of my sexual organ. ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो अपने फादर को compete नहीं करता, और अल्टीमेटली वो अपने जो फादर है उसको अपने करीब कर लेता है, और उसमें मेस्कुलिनिटी डेवलप हो जाती है, और सोसाइटी उसको रियलाइज करवाती है कि लुक लाइक अ मेल। गॉट इट? और वो कहता है कि ये नेचुरल है। अब ये जो उसकी थ्योरी थी, इसको क्रिटिसाइज किया इसको क्रिटिसाइज किया इसने जैकलिन रोज वगैरह ने भी, और इसमें जो उसकी अपनी बेटी है, इसकी क्या नाम था इसका, सिगमंड फ्रॉयड की बेटी फ्रीडन ने भी और मिचेल ने भी, उन्होंने ये कहा कि ये जो सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी है दैट इज मोर वल्गर। ठीक है, अब क्यों ये थ्योरी है उसकी वल्गर है, कि उसने कहा था कि इसमें जो सिगमंड फ्रॉयड था वो फीमेल की पर्सनालिटी को जज करता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्सुअल डिजायर्स। ठीक है, कि जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी में सिर्फ एक फैक्टर है, दैट इज अ जेनिटेलिया, और वही आपकी जो फ्यूचर है और आपकी जो डेस्टिनी है उसको वो डिसाइड करता है। तो बायोलॉजी वाज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ डेस्टिनी। अब ये जो थ्योरी थी उसको, इवन उसमें जो लकानियन स्कूल ऑफ थॉट है, दो स्कूल ऑफ थॉट है ना, एक है फ्रूडियन स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा लकानियन स्कूल ऑफ थॉट। तो इवन जो लकान है, लकानियन स्कूल ऑफ थॉट है, वो उसको डिसएग्री करता है उसके साथ, सिगमंड फ्रॉयड के साथ। अब उसमें जो लकानियन स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि दैट इज अ सिंबॉलिक, अगर आप कहते हो ना कि ये जो मेल है, मेल पावरफुल है, तो वो मेल इसलिए पावरफुल नहीं है कि उसके पास पीनस है, ये आपकी लैंग्वेज है। जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अलिशबा इज अ वेरी डिसेंट गर्ल, तो जब ये जो डिसेंट है वो आपके कल्चर ने एक वर्ड कंस्ट्रक्ट किया है, और जब हम अलिशबा को डिसेंट कहते हैं तो एवरीबडी इज गोइंग टू टेक इन द सेम वे, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट। हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये जो है ना, क्या नाम था इसका, नबील, हम कहते हैं कि नबील डिस्ट्रैक्ट हो जाता है पढ़ते हुए। तो जब मैं कहता हूँ नबील डिस्ट्रैक्ट हो जाता है पढ़ते हुए, तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्ट्रैक्ट है वो हम सारे एक कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग लेते हैं। तो जो लकानियन स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिंबल्स, उन सिंबल्स के सर्टेन मीनिंग्स होते हैं, और वो मीनिंग्स सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है, और वो मीनिंग्स एक यूनिफॉर्मली इंडिविजुअल्स को कन्वे किए जाते हैं। लकानियन स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि मेल पावरफुल नहीं है, बल्कि वो जो पीनस है जिसको आपने पावरफुल बनाया है उसकी बेसिस पे आपको लगता है कि मेल पावरफुल, अदरवाइज मेल इज नॉट अ पावरफुल। तो ये आपकी जो लैंग्वेज है वो आपकी थिंकिंग को शेप करती है। एक्सलेंट, थैंक यू वेरी मच अलिशबा। ठीक है, सो दैट्स ऑल विद दिस। ओके, अब जो इनमें डिफरेंस था, इसमें इसमें ये था कि जो ये था ना आपका स्कूल, फ्रूडियन स्कूल ऑफ थॉट, फ्रूडियन स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि सेक्स इज अ नेसेसिटी, heterosexuality is a necessity because ultimately that is going to make your personality complete, or that is going to overcome your inferiority complex. जो lacanian school of thought है वो सेक्स को necessity नहीं लेता, वो सेक्स को एज अ लग्जरी के कॉन्टेक्स्ट में लेता है। ठीक है, कि ये ऐसा जो है वो उसमें नहीं है, जो आपकी लैंग्वेज है। अब इसमें जो एक एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें ये जो न्यूयॉर्क सबवे स्टेशन था, वहां पे एक लड़की को दिखाया जाता है कि जो हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि किस तरह लैंग्वेज आपको वो अट्रैक्ट करती है।
अब उसमें जो न्यूयॉर्क सबवे पे एक एड चल रहा होता है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट पे, ठीक है, ब्रेस्ट एनहांसमेंट पे। तो देयर वाज अ फीमेल हु वाज होल्डिंग अ ग्रेप फ्रूट एंड शी वाज स्माइलिंग, एंड देयर वाज अ फीमेल हु वाज होल्डिंग एप्पल एंड शी वाज more gloomy. So this is the power of language, that you are going to influence the psyche of a woman, that how they would be more attractive, and what things they are going to make them more appealing in the eye of other women as well, and as you could talk of in the members of other society as well. Okay, so उनका ये ख्याल था कि ये आपकी जो लैंग्वेज है वो आपको ये पावरफुल बनाती है। ये अच्छा काफी हो गया है, अच्छा इसको कंप्लीट तो अब करने देना, ठीक है। ओके, तो ये जो थ्योरी थी साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म की थ्योरी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। सॉरी। तो साइकोलॉजिकल फेमिनिज्म थ्योरी ये कहती है कि ये ऐसा नहीं है, कि ये कहना कि फीमेल क्योंकि इन्फीरियर है, क्योंकि उसमें पावर नहीं है, और अल्टीमेटली वो जब हेट्रोसेक्सुअल होती है तो तभी वो पावर फील करती है, और नेचर ने उसको कमजोर बनाया हुआ है, और जो बायोलॉजी है दैट इज अ डेस्टिनी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ठीक है। और इवन जो बाकी इसमें जो कुछ अर्ली थ्योरीज की जब हम बात करने हैं, फॉर एग्जांपल जो हॉर्नी है, फोकस ऑन द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि इसमें उसने डिफरेंट जो स्कॉलर थे फिर उन्होंने इसके डिफरेंट जस्टिफिकेशन दी कि फीमेल की फादर के साथ अटैचमेंट इस वजह से होती है क्योंकि अल्टीमेटली जो फीमेल है मेल है वो क्योंकि उसको ज्यादा उसके साथ टाइम नहीं गुजरता, वो उसकी मदर के साथ गुजरता है फीमेल का, तो जिसकी बेसिस पे दे फील कंफर्टेबल while having more attachment with the father, ठीक है। और रादर देन कि आप उसमें ये करें, और इवन जिसमें कुछ जो फेमिनिस्ट थे उन जो राइटर्स थे वो ये कहते थे कि बजाय ये कहने के कि जो फीमेल हैं, फीमेल में पेनिस एनवी है, तो फीमेल में पेनिस एनवी नहीं है, बल्कि उनका ये ख्याल था कि बेसिकली जो फीमेल हैं, सॉरी, इसमें अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको बस शेयरिंग पेरेंटिंग की बात कर दी है, और यस, तो उनका ये ख्याल था कि ये कहना कि जो फीमेल है उनमें पीनस एनवी है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इन्होंने कहा कि वेमेन में ऑटो जो है एरोटिसिज्म है, ठीक है। कि उनका ये ख्याल था कि अगर हम ओवरऑल बॉडी की बात करें तो फीमेल की तो बॉडी तो खूबसूरत है एज कम्पेयर टू मेल बॉडी, तो जब उनमें ऑटो एरोटिसिज्म है तो इस चीज को तो वैसे ही आपने इग्नोर किया हुआ है। तो अगेन दिस इज अ डिफरेंट व्यू जो कि आप सोसाइटी को रियलाइज करवाते हो कि ये है और ये नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट। तो साइकोसेक्सुअल जो था आप इसमें कह लें कि ज्यादातर जो फोकस था वो उनका था कि फीमेल भी उसी तरह से सुपीरियर है, फीमेल में सिर्फ एक सेक्सुअल डिजायर नहीं है, फीमेल में और भी डिजायर्स हैं टू सक्सीड इन लाइफ। तो ये सोसाइटी है जो कि फीमेल को रियलाइज करवाती है कि उसकी पर्सनैलिटी सिर्फ सेक्स के गिर्द घूमती है, तो ऐसा नहीं है, और उनमें कोई इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो जब तक आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फीमेल को पावरफुल नहीं बनाएंगे, आपकी जो एजेंसीज हैं, आपकी फैमिली, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वो पावरफुल नहीं बनाएंगे, तब तक फीमेल पावरफुल नहीं बन सकेगी। So rather than making women realize that they are inferior, you have to make women psychologically superior. You have to make women understand that they are competent enough to compete in a society. So definitely they are going to perform their services better in future. Got it? So that is a psychoanalytical feminism. अब जाते हैं. Thank you very much, Yusra. Do you have any questions before starting men's feminism? Do you have any question? Yes, Claire, thank you very much. I'm really grateful to you for your nice participation in the class and for having your engagements as well. And you, thank you very much. See you in the next class and take care of yourself. Okay. Okay. See you. Bye bye. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.